Hello beta, good evening everyone. Beta, welcome to the first class of optimization. Okay. In today's lecture, we will go ahead and we will talk about what is comparative statics. ठीक है बेटा, आज हम comparative statics की बात करेंगे. तो comparative statics chapter number 6 of AC Chiang है और इसमें what we are going to go ahead and do beta, we are going to go ahead and talk about what is a derivative. Derivative क्या होता है, rate of change क्या होता है, इन सब चीजों की हम बात करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड बिटवीन डिफरेंशियल कैलकुलस. दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम. बहुत बच्चों को लगता है ये दोनों सेम है, राइट? तो इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे. सो बेटा प्लीज स्टार्ट बाय राइटिंग. आई वांट टू गो अहेड एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द nature of comparative statics. So the first thing that we want to understand, what is comparative statics? Okay. Beta, we already know what is exogenous variable and endogenous variable. ये हमने chapter 2 में पढ़ा था. What is exogenous variable and what is endogenous variable, है ना? But what is exogenous variable? What is determined outside the model? It is given to you, है ना? But what is endogenous variable? Something which is within the model, जिसकी value आपको निकालनी है, right? Just for example, let us go ahead and say that let's talk about I want to, I'm not sure if you have ever heard of Phillips curve. अभी तक Phillips curve तो हमने नहीं किया होगा. Let's say I have, let's say, the equation of the GDP. Y is equal to C plus I plus G plus NX. ठीक है बेटा? तो इसमें ये जितने भी वेरिएबल्स है ना, I, G, NX, इनकी वैल्यू आपको दी होती है. You're given these values. So if you're given these values, they are called as exogenous variables. And you have to find the value of Y. That is an endogenous variable. So what is determined within the model? Y is determined within the model. So Y is endogenous. And other things like C, I, G, NX, these beta are exogenous. Is this clear? One is endogenous, one is exogenous. Now, if I go ahead and I write an equation, just for example, let's say that I have written that Y is f of x. What does this mean? It means Y is a function of x. Y is a function of x, right? Now, let us go ahead and let us try to first of all figure out what is the concept of change. Change का मतलब क्या होता है? Quotient का मतलब क्या होता है? I want to go ahead and I want to figure out that. In order to go ahead and figure out that, let's say that there is a variable x, the same variable x. And let's say that beta, its initial value that is given to you as x naught, right? And I'm saying that its final value, beta, that is given to you as x1. So you have two values given to you, initial value and the final value, right? The difference between the two. The difference between initial value and the final value minus initial value, beta isko bolte hai change in x. So what is change in x? x1 minus x naught, that is called as change in x, right? जैसे एक example लेते हैं. Example. If I tell you that the initial value of x is 0,
and the final value of x is 2. So beta, change in x kya ho gaya? 2 minus 0, that means 2. That is the change in x. Now, I am telling you that y is a function of x. So beta, jab x 0 raha hoga, to y, which is a function of x, usme maine x not put kiya hoga. And when x would have been 2, so beta again, y is a function of x, na? So I would have put x1 here, right? So take an example. Suppose I tell you that my function is given to me as 5 plus x square. Beta, what is the value when you put x as 0? You will get 5 plus 0 square, which means 5. Beta, what is the value when you put x as 2? Then this will be 5 plus 2 square, 5 plus 4, that means 9. है ना? So what is the, ये तो y हो गया, right? This is y0, this is y1. So what is the change in the value of the y? So y is changing, that means y1 minus y0, that means 9 minus 5, that means 4. So this is 4. Is this clear? So the change in the value of y beta is, once you have put x as x0, samjho, hai na? Once you have put x as x1, you found out the difference between the two and you got the change in y. अच्छा, एक बात समझाओ मुझे जरा बेटा, अगर मैं बोलूं, सपोज यहाँ पे थोड़ा सा हमें, let's create this gap here. बेटा, if I am telling you that जो मेरा change in x है ना, my change in x, that is x1 minus x0. So can I rewrite this and say that x1 is nothing but change in x plus x0? कुछ गलत तो नहीं है बेटा. x0 is given to you as 0, x1 is given to you as 2. So change in x कितना है? How much is change in x? 2 minus 0, 2. So can I reverse this and can I say that if change in x is x1 minus x0, I can take this here and say that x1 will be change in x plus x0. Is this clear? But what is change in y? कैसे निकाला हमने change in y? First of all, in my function, I plugged the value x1. ये देखो, मैंने x1 की value डाली, मतलब 2. I plugged the value of x0. See, मैंने x0 की value निकाली, which is f of 0. I found out the difference between the two. So I found out 9 minus 5. What did I get? I got the answer as 4. So beta, can I say that change in y is nothing but f of x1 minus f of x0? I can say that. कोई गलत बात नहीं है. But I have gone ahead and I have written x1 as this. x1 को तो ऐसे लिख दिया ना. So which means this is nothing but f of change in x plus x0 minus f of x0. Right? This is your change in y. Now, I am defining something, but this is called as difference equation. इसको हम बोलते हैं difference quotient. ठीक है जी. Beta, what is difference quotient? The change in y per unit of change in x. This is called as your difference quotient. So when you find change in y upon change in x, इसको difference quotient बोलते हैं. What is change in y, beta? When you have put the value of x1 minus you have put the value of x0. जब हमने function के अंदर x को एक बारी 0 पुट किया और एक बारी 2 पुट किया, इनका जो difference है, beta, that is change in y. What is change in x? Beta, change in x is x1 minus x0, जो हमने इन दोनों का difference निकाला था. This one, x1 minus x0. Can I also write this as f of
instead of x1, can I write this? I can. So I will write this as x naught plus change in x minus f of x naught upon x1 minus x naught. Clear हुआ? बेटा, this is called, देखो, इसको बोलते हैं difference quotient, and this is also called the average rate of change of y. What is this called? The average rate of change of y. So please write this down with me. Okay? This is called average rate of change of y. This is what it is called. Is this clear? Okay, let's take some questions, huh? So question number 1. Beta, you are given y is a function of x and y is nothing but 3x square minus 4. Y is nothing but 3x square minus 4. And I'm asking you find the difference quotient in terms of x. आपको difference quotient निकालना है in terms of x. Okay बेटा, let's start. तो हम क्या कर सकते हैं? पहले हम x की जगह पे x naught put कर सकते हैं. Instead of x, I can put x naught. So what will I get? When I put the initial value of x, f of x naught, I will get 3x naught whole square minus 4. Instead of x, I have written x naught. Then, beta, instead of x, क्या लिखना है? Instead of x, I have to put x naught plus change in x. So x naught plus change in x. So bacha, this will be 3 x naught plus change in x whole square minus 4. Clear हुआ? अच्छा, ये वाला पार्ट देखो जरा बेटा. This is a plus b whole square. What is that? A square plus b square plus 2ab. So beta, this can be written as 3x naught square plus change in x square plus 2a b and minus 4 ऐसे. So I can rewrite this as 3x naught square plus 3 change in x square plus 6 x naught change in x minus 4. Clear? Okay. Now tell me something. What is the formula? हमने क्या formula निकाला अभी to find out the difference quotient? It is change in y upon change in x. है ना? That's the formula I have used. So beta, change in y was what? F of x naught plus change in x minus f of x naught. And beta, what will be change in x? Change in x. Simple है. Change in x का हमने already formula लिखा हुआ था, x1 minus x naught. So I can just keep this as change in x also. Beta, this part, ये वाला जो हमारा part है, इसी को open करके we have written this. तो लिख लो एक बार जरा. You will get 3x naught square plus 3 change in x square plus 6 x naught change in x minus 4 minus, better then put this part, sorry, f of x naught. क्या मिलेगा? Minus 3 x naught square plus 4. Minus करोगे तो ये आ जाएगा. Divided by change in x. Beta, this cancels out. This cancels out. So you will be left up with 6 x naught into change in x plus 3 change in x whole square upon change in x. This is your first question, first example of the book. Chapter 6, AC Chiang. This is your first example. ठीक है बेटा? तो अब क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं. 6x naught change in x upon change in x plus 3 change in x whole square upon change in x. So beta, this will be 6x naught plus 3 change in
x. Now, better write down the second part to this question. So now you're given that let x naught be 3 and let the change in x be 4. Find average rate of change of y. So beta, now I am given these values, no? X not be given or change in x be given, so I can just plug this in. So I will get 6 into 3 plus 3 into 4. This will be 6, 12, 18 plus 12. This will be 30. So change, how do I interpret this? Change in y is 30 units. Is 30 units per unit. Change in x. Matlab, I am saying that change in y by change in x, this is coming as 30. So beta, when I will put change in x as 1, what will I get? This na? 30 into 1, that means 30. So whenever x will change by 1 unit, y will change by 30 units. Whenever x will change by 1 unit, y will change by 30 units. Clear ho gaya ye? Absolutely clear ho gaya hame. Are we clear with this definition? Yes. है ना? We have understood what this means. Okay. अब बेटा बहुत important concept हम यहाँ से जा रहे हैं, and this is called the derivative. So please write down the derivative. Now, बेटा we have found out change in y by change in x. ये तो हमने निकाल लिया. We have already found this out. When from this change in y by change in x, हम अपने change को बहुत small कर देते हैं. We make the change very, very small. Then what we get, beta, that is called the derivative. So when I say that I am making the change very, very small, what does that mean? It means that I am putting limit change in x tends to 0. पहले हम example में समझेंगे, then we will write the definition. अच्छा यहाँ देखो, come back here to this question, huh? So beta, when I found out change in y by change in x, what is the term I got? क्या मेरे को मिला? I got 6x naught plus 3 change in x. Now I am saying that my x is changing by very small amount. मेरा x बहुत कम amount से change हो रहा है. So I will go ahead and I will put limit change in x tends to 0. कुछ नहीं करना है इस पूरी केस में. You just have to put this equal to 0. So when you will put limit change in x tends to 0, inside this function 6x naught plus 3 change in x, what will you get, beta? This will be, सिर्फ यही तो 0 आ रहा है, so I just have to plug 0 here ना, तो put कर दो. This will be 6x naught plus 3 into 0. This will be 6x naught. This means that this is the derivative of this function. जो भी हमने function लिखा था, इसका derivative, बेटा, that is 6x naught. Are we clear? बहुत simple concept है. What is derivative? कुछ भी नहीं है. Derivative का मतलब होता है derived function, the function that you are deriving, है ना? तो बेटा जो initial function होता है, whatever the initial function you have, this is called as the primitive function. What is this called? This is called as the primitive function. And derivative is what is derived from this function, है ना? So derivative अपने आप में उसमें word है that it is being derived from this function. Absolutely understood हो गया. I hope this is clear to you. तो बेटा जब हमने change in y by change in x निकाला था, when we found out this, इसका हमने क्या term बोला? We called this as the average rate of change. Similarly, when we put limit x tends to 0, जब हम limit x को 0 कर देते हैं ना, the answer that we get, that is called as beta instantaneous rate of change. What is that called?
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसी को हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो कुछ नहीं है बट दैट इज माय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, and I can write that as change in y by change in x, but I will put that change in x to 0. उसकी जो हम वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं change in x की, वो हम 0 कर देंगे। I hope this is clear to you. We have done it in multiple steps. Okay, beta. Now I will take one exercise question. So again, AC Chiang, chapter 6, exercise 6.2, question 1. Beta, question लिखो। The function is given to you as y is equal to 4x square plus 9. First, it says find difference quotient as a function of x and change in x. ठीक है बेटा? Part B, find derivative dy by dx. Part C, find f dash 3 and f dash 4. ठीक है? Is this clear, beta? Let's start. So first of all, I want to find the difference quotient. But how did I explain that? Everybody will do it with me. How did I explain it? It is change in y by change in x. है ना? What is change in y? Value of the function at new value of x, value of the function at old value of x upon change in x. But value of function at new value क्या है? कुछ नहीं ma'am, we know this. This is f of x naught plus change in x minus f of x naught upon change in x. तो एक बारी फंक्शन के अंदर हमें x naught plus change in x पुट करना है। उसी फंक्शन में we have to put x naught and then we have to find the difference. कर दो जल्दी से। So बेटा y is 4x square plus 9 ना, so function का value at x naught plus change in x क्या हो जाएगा? 4. Instead of x you will put x naught plus change in x whole square plus 9. So बेटा you will have 4. Use a plus b whole square formula here. What will you get? A square plus b square plus 2ab plus, clear? So beta we will have f of x naught square plus this plus 8 x naught change in x plus 9. I hope ये एकदम clear हो गया. This is very very easy. ठीक है बेटा? अब हम function में ही we will go ahead and put only x naught. So if in the function instead of x I am writing x naught, but what will I get? I will get 4 x naught whole square plus 9. Okay beta? Now find out f of x naught plus change in x minus f of x naught. इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो जरा. What will you get? 4 x naught square plus 4 change in x whole square plus 8 x naught change in x plus 9 minus 4 x naught square minus 9. बेटा what cancels out? मैम ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो मैम I am only left up with this. ओके बेटा, ये हमारा हो गया. दिस इज f of this. अब क्या निकालने को बोला है? डिफरेंस क्वोशिएंट बोला है ना. सो व्हाट इज डिफरेंस क्वोशिएंट? मैम वेरी सिंपल, चेंज इन y बाय चेंज इन x. चेंज इन y I have found out as this मैम, 4 change in x whole square plus 8 x naught change in x divided by change in x. बस just solve that. क्या मिल जाएगा बेटा? 4 change in x whole square upon change in x plus 8 x naught change in x upon change in x. So beta this will cancel out. 4 change in x, this will cancel out 8x.
This is the first part to this question, है ना? So we have been able to find out the difference quotient. ये निकल गया. Okay बेटा, next part देखो. Next says find the derivative. क्या बोला मैंने? Derivative में क्या करना है? Second part. You just have to put limit change in x tends to 0. So instead of this, just plug that to 0. So beta, what will you get? 4 into 0 plus 8x naught. So your differentiation will be 8x naught. यही तो डेरिवेटिव होता है. कैसे निकालते आप डेरिवेटिव अगर मैं आपको बोलती बेटा, if this was your function, है ना, and you were asked to find out dy by dx, so power comes down and power reduces by 1. So beta, derivative 8x ही तो था, and that is exactly the derivative you're getting here, 8x naught, right? Third and last part beta, it says find the derivative when the value of x is 3. So beta, x की जगह पे 3 put कर दो ना, it will be 24. Find the value of derivative when x is 4. X की जगह पे 4 put कर दो. So this is 32. This is how you can go ahead and you can find the derivatives. Is this clear? Give me a yes if it is clear to you. Everybody, difference quotient एकदम clear होना चाहिए. Derivative एकदम clear होना चाहिए. Okay, so beta, now question that you have to do as homework. You're given the function 5x square minus 4x. Beta, find out difference quotient as a function of x and change in x. Beta, second part, find dy by dx. Beta, third part, find f-2 and f-3. Please do this as your homework. Okay? I hope this is clear to you how we find the derivative quotient. Okay, so we will go ahead and stop here for today. In the next class, beta, I will talk about the slope and how to use limits in the slope. Okay, we will try and we will finish chapter 6 in maybe 2 to 3 classes. Okay, but in the next class, we will talk about slope and limit. Okay, thank you, beta. Best of luck. Thank you. Hello, good evening, everyone. Welcome to the second lecture on optimization methods for economic analysis. In the last class beta, we had gone ahead and we had talked about what is the definition of a derivative. Okay, ji. This is chapter number 6 of your AC Chiang. Today, I'm going to go ahead and take you further and we want to talk about derivative and slope of a curve. So we want to go ahead and we want to take the analysis further and we want to talk about derivative and slope of the curve. To begin with, बेटा जो book ने example दिया है वो दिया है total cost function का. So the book has given an example of the total cost function. What do I mean by a total cost function? By total cost function, I mean what is the total cost of producing the output. Now, whenever we talk about total cost, this is a function of the output. ठीक है जी, ये बताता है कितनी cost लग रही है output को produce करने के लिए. So total cost is a function of the output. From here, we can define marginal cost. And marginal cost क्या होती है बेटा? How total cost changes as output changes. So if I change my output by very small amount,
how will the total cost change? That is called as marginal cost. देखो, अगर तो मेरा आउटपुट एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, if my output is a discrete variable, so change in output को 1 होना जरूरी होगा, क्योंकि आउटपुट 1, 2, 3, 4 ऐसे मेजर होते हैं. So if my output is a discrete variable, then change in output can only be measured in terms of numbers. So उस केस में हम बोलेंगे marginal cost is how cost changes when output changes by 1. जब हम output को एक यूनिट से बदल रहे हैं तो कितना cost change होगी, that is marginal cost. But beta, if my output is a continuous variable, यूजुअली हम इकोनॉमिक्स में कंटिन्यूअस वेरिएबल्स लेते हैं. सो इफ माय आउटपुट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, देन आई एम आस्किंग हाउ माय टोटल कॉस्ट इज चेंजिंग व्हेन आउटपुट इज चेंजिंग बाय वेरी स्मॉल अमाउंट. बहुत बहुत छोटे से जब आउटपुट चेंज हो तो टोटल कॉस्ट कैसे चेंज होगी, वो मार्जिनल कॉस्ट है. दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट. ओके, नाउ बेटा, if you remember in the last class, I told you the concept of derivatives. And I told you कि जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो जो हमारा चेंज होता है उसको हम बहुत ही स्मॉल मानते हैं. We assume that the change is close to 0. And उस पॉइंट पे जो चेंज इन y आता है, when change in x is close to 0, that is called as the derivative. That is called as the slope. उसी तरीके से यहाँ पर भी we are saying the same thing only. That if my output is changing by a very, very small amount, that means if my output, it is approaching 0, the change is very small, then how will the cost change? That is called the slope of total cost, और इसको हम बोलते हैं marginal cost. So the change in Q is very, very small. Clear हुई ये बात? अच्छा, next बात हम क्या करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज आई प्लॉट अ कॉस्ट फंक्शन. लेट्स से माय कॉस्ट फंक्शन दैट आई हैव, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बेटा. दिस इज माय कॉस्ट फंक्शन एंड कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट. ओके, नाउ I need to go ahead and I need to ask myself, what is the slope of this cost function? Right, beta? So what can I go ahead and do? I can go ahead and I can take an initial point first. So let's say point A. This is my initial point, है ना? At this initial point, my output is Q naught. And इसको ना थोड़ा सा और better बना देते हैं, एक मिनट. At this initial point, my output is Q naught. And the cost of this output is C naught. Clear ho? Cost of this output is C naught. Okay. Now, I am changing my output from Q naught to Q2. This is Q2. Okay, beta. This is point B that I have here. Right? And across this point B here, but here I have point C2. So point B, it represents quantity Q2 and corresponding cost C2. And point A, it represents quantity Q naught and corresponding cost C0. Okay. Now, beta, if I ask you, what is your marginal cost? What will you tell me? You will tell me marginal cost is nothing but change in cost due to change in quantity. तो cost जो है, it is going from C0 to C2 ना, तो जो change in cost हुआ, this is the change in cost. और change in quantity क्या हो गया? This much Q2 minus Q0. So this is the change in quantity. Clear हो बात को? अब बेटा बात ध्यान से समझो. If I want to go ahead and I want to represent this mathematically, so suppose what I can go ahead and do is, let me just draw with another color ये point. तो बेटा ये जो point है, change in quantity, ये यहाँ से भी measure हो सकता है. It can be measured from above also.
So here, if I take a point, say E, so can I say that change in this quantity is nothing but this AE? Similarly, beta, change in cost is this, na? So can I say this gap though remains the same? Can I say that gap is nothing but BE? Yes, I can say that. So beta, change in Q को मैं लिख सकती हूँ. I can write that as AE. And change in cost को मैं लिख सकती हूँ BE. I can write that as BE. Is that clear? So I can go ahead and I can write this as the ratio of two line segment BE by AE. बेटा बहुत ध्यान से समझो. मैथमेटिकली स्पीकिंग जो हमारा स्लोप होता है किसी का भी, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. व्हाट इज स्लोप बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस इज कॉल्ड द स्लोप. सो इफ आई जस्ट गो बैक एंड आई चेक हियर, तो ये जो मेरी लाइन है ना, इफ आई ज्वाइन लाइन ए बी, if I join line AB, this one, huh? So for line AB, my slope beta will be perpendicular by base, है ना? Perpendicular इसका हो गया ये और base हो गया ये. So I can say that slope of line AB, this is nothing but perpendicular BE by base AE. Is this clear? This particular ratio, this is actually called as average rate of change. What is this called, beta? This ratio is also called as average rate of change. इस ratio को क्या बोलते हैं? What is this called? This is called as average rate of change. Is this clear? So change in the cost upon change in the quantity. If you find this, it can be also in your case called average marginal cost. Clear हुआ? Now, what happens? Next question ये आता है that what happens when we vary the magnitude of change in Q? जब मैं change in quantity को vary करती हूँ, when I vary that, what happens in that case? So if you go ahead and you think about this, beta, suppose I don't change quantity from Q0 to Q2. मैं Q0 से Q2 तक नहीं जाती हूँ. And I tell you that beta, I just want to change quantity from Q0 to, let's say, Q1. I just want to change quantity from Q0 to Q1. So can you see that if I change quantity from Q0 to Q1, beta, this will be my perpendicular. Okay, beta, I can mark this point as point D. Beta, this will be my base. And beta, this will be my slope, AD. Are you able to understand this thing? If I just have this much change, तो इस quantity के corresponding मैंने देखा कि cost कितनी है. On the cost curve, I make a point D and I get AD. So when I vary the quantity, when I change the quantity to Q1, तो इस केस में जो मेरा बेटा स्लोप होगा, that slope will be just AD and AD will be written as, अगर मैं यहाँ पे एक और point बना दूँ, same, I make a point F. So AD can be written as DF by AF. Is this clear? AD can be written as DF by AF. अच्छा, what if I reduce the quantity further? But what if I just want to change the quantity from Q0 to Q2? Ma'am, simple. If you want to change the quantity from Q0 to Q2, the perpendicular base will only be this much. Perpendicular will be this much, and this will be the slope. So you are seeing how I can reduce the quantity change. कम करते जाओ, तो एक पॉइंट आएगा जब आपको सिर्फ एक पॉइंट से टेंजेंट लाइन मिल जाएगी, एक पॉइंट मिल जाएगा. That will be the slope at that point. क्या बोल देंगे उसको? Slope at that point. So beta, as I will keep reducing this quantity, जब मैं इस change को कम करती जाऊंगी, देखो पहले change कितना सारा था. First my change was this much, है ना? So जब I increased my quantity from Q0 to Q2, मैं यहाँ से cost curve पे गई, मेरा cost उतने से change हुआ. So perpendicular by base ये बना.
right? Then beta, in the next case, I just changed it from Q0 to Q1. So cost यहाँ तक आया, so perpendicular by base ये बन गया. In the next case, beta perpendicular by base further fold, perpendicular by base. If you further reduce the quantity, see my quantity just increases from this to this. So beta perpendicular by base will be very, very small. So as you go ahead and you change the quantity to very, very small amount, change in quantity becomes very, very small. In that case, you get the slope at that. ठीक है, तो इसको कैसे represent कर सकते हैं? Slope of the function at Q0. This is how you can go ahead and represent it. I hope everyone is clear with this concept. ये बात ध्यान से समझ लो कि जब भी slope निकालते हैं तो जो हमारा denominator है उसके change को हम tends to 0 करते हैं. मतलब उस change को हम बहुत 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 कम कर देते हैं. We reduce that change to very, 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 very small amount, and then we see what is the change in y. Accordingly, we will get the slope at that point. Okay. Achha. Now, I want to also talk with you today on the concept of limit. So please write down this topic, concept of limit. Beta, derivative हमें समझ में आ गया. We have understood what's the derivative. So what is dy by dx? Ma'am, very simple. If we have to find dy by dx, you find change in y by change in x, and the change in x should be very, 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 very small. That is dy by dx. So if you see here, in order to find the derivative, beta, I am using the concept of limit. Derivative निकालने के लिए हम limit के concept को use कर रहे हैं. We are using the concept of limit. है ना? So here, we need to distinguish between two kind of limits. One is called as left hand limit, and second beta is known as right hand limit. So एक चीज को हम बोल देते हैं left hand limit और एक चीज को हम बोल देते हैं right hand limit. Is that clear beta? Okay. Now let us focus on what this is. Limit होती क्या है? किस चीज को limit बोलते हैं? So limit का क्या मतलब है? What value does the variable approach, right, as it goes towards another variable? That is called limit. मतलब लिमिट का क्या मतलब है कि जैसे 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 मैं एक नंबर की तरफ जाती जाऊं तो मैं जब मैं एक नंबर की डायरेक्शन में जा रही हूं तो मैं किस नंबर को अप्रोच कर रही हूं, that is called as the limit. For your understanding, let us try to understand some graphical example that will make you understand the concept of limit, है ना? तो बेटा, the first example, just see here carefully, huh? So this is how I am drawing this. Okay, beta, just see here. What have I written? So this is suppose n. Look here. In this case, in the first case, what have I done? Beta, I see that when I go from the left hand side, my arrow shows I'm going towards this value. As I approach n, this curve approaches L. And as I approach n from here, then also my arrow shows that I approach L. So in this case, one, I have a smooth curve. ठीक है बेटा, और जब हमारा ये वेरिएबल v, सपोज यहाँ पे मैंने v लिया और यहाँ पे q, सो जब मेरा वेरिएबल v n की तरफ जा रहा है, बेशक ही फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो मेरा जो वेरिएबल q है वो l की तरफ जा रहा है, बेशक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड. So you have to see the direction of the arrows, huh? You have to see the direction of the arrows. So see that from here also,
My arrow is going towards this direction and here it is going towards this direction. So beta, we can say that both limits tell us that we approach L. जैसे जैसे variable n को approach करता है, as v is approaching n, then my variable q that is approaching L, that is becoming equal to L, whether from the left hand side or from the right hand side. Is that clear? ये clear हुआ थोड़ा सा भी? अच्छा. Let us go ahead and take one more example to make things easier for you guys. So now what I am doing is the following. ध्यान से समझेंगे, हाँ? Beta, here I have n. Here I have L. Okay, beta, this is Q. This is V. Beta, अब देखो curve. This is my curve, huh? Now what I have done is something very, very interesting. See here. I have no more made a smooth curve. यहाँ पे smooth नहीं है. अरे ये एक kink हो गया ना? यहाँ पे एक kink लेते हैं, वापस आ जाता है. Smoothness होती है ऐसी. ये smooth था ये curve. तो हमने बोला कि अच्छा, जब हम n पे हैं, तो यहाँ पे हम L पे हैं. Whether हम n को left से approach करें या right से, दोनों ही side से हम L की तरफ जाते हैं. But curve was smooth. But here curve is not smooth. Curve is a kink. एक sharp turn है और फिर sharp exit है. But the arrows are pointed towards this direction. So when I go to n, when my v goes to n, then my curve is going towards L from here. And when I go to n from here, then also my curve is going to L from here. So beta, what do I see? I see that the curve is not smooth. Okay, no problem. But as I go toward n, either from the left hand side or from the right hand side, I see that Q is going towards L. So yes, here beta limit exists. Q limit exists कर रही है because दोनों ही left hand side and right hand side say we are approaching towards L, right beta? So I can say limit as v approaches n, q approaches L. So जब v n की तरफ जाता है from both the sides, q L की तरफ जाता है from both the sides. Beta, let's look into the third diagram for the day. Now what I'm doing is the following. N, L. Now, beta, the curve that I have drawn is like this. L1 dot, 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 V. Now let us try to understand what we have shown in this case. But this function, it is called as a step function. इसको हम step function बोलते हैं. हाँ. Try to understand this thing. When I am going towards n from the right hand side, तो right hand side, sorry, from the left hand side, तो left side के लिए कौन सा curve है बेटा? इस side पे कौन सा curve हमें दिख रहा है? The upper line, ना? So I will look at the upper line. है ना? So when I am below n, then this function, it is going like this, right? So when I am, when I am having a value of v going to n from the left hand side, then the left hand limit is of q is L1. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? This is how we write this. When v is approaching n, जब v n की तरफ जाता है from the left hand side, so I will use the term minus. Minus means left hand side. And so then at that point, beta, my q gives me the value L1. Q gives me the value L1. But beta, when I approach n from the right hand side, right? When I approach n from the right hand side, suppose I should make it here to make things easier for you. So
instead of this, let me draw this here. Okay, beta. So just see here. When I'm approaching V is approaching N from the right hand side. मतलब यहाँ से हम N की तरफ गए. So beta, then what is happening? In that case, Q has a value of L. ये देखो, Q is going towards L. So in this region, when V, दोनों ही side से V is going to N. But here when V is going to N, then Q की value क्या आ रही है? And Q की value is going towards L. And from this side, when V is going to N, so Q is going towards what, ma'am? Q is going towards L1. दोनों ही side से N पे, I am getting two different values. At 1, I am getting L1. At 1, I am getting L, depending on the left hand or the right hand side. Is that clear? So beta, this means that limit does not exist. Because I'm getting two very, very different values. Is this clear? This means that limit does not exist. Okay, beta, one last example I want to take for the day. Then we will take its numericals in the next class. So now I'm taking N here and I'm taking, suppose, M here. This is QOV. And I have something like this. Okay, beta. ध्यान से समझो, हाँ. I am saying when I approach N from the left hand side, जब मैं N की तरफ left hand side से जाती हूँ, so beta, how is my arrow pointed? Arrow is going down and down and down. So beta, here what do I have? And here I have minus infinity. Here what do I have? Here I have plus infinity. ऊपर तक जा रहा है ना? So as I go to N from the left hand side, then beta, my diagram tells me that I must go towards minus infinity. And as I go to N from the right hand side, then my arrow tells me that I must go towards plus infinity. So one tells me I must go towards minus infinity, and other tells me I must go towards plus infinity. Again, I am getting two very different values, right? So when I'm trying to approach, when V is going towards N from the left hand side, left hand is showed by N minus, N से थोड़ी कम values के लिए, I am going towards minus infinity. Q is approaching minus infinity. And when I'm approaching this N from the right hand side, मतलब N की ज़्यादा वाली values है ना ये सारी, so N plus, then beta my Q is going towards plus infinity. So they are not meeting. They have different values. This again shows us that left hand limit is not equal to right hand limit. So limit does not exist. Is this clear? So this is a diagrammatic approach to show you where limit exists and where limit does not exist. In the next class, I will go ahead and I will do some examples on limit. ठीक है बेटा, और उन examples के बाद we will talk about inequalities in the next class. Okay, thank you. Okay, hello everyone. Welcome to the third lecture of optimization. And in today's lecture, we will go ahead and we will continue with limits. है ना बेटा? अच्छा. So we had already gone ahead and we had studied what is limit, right? We talked a bit about understanding when limits are defined. Today I will take some questions based on it. So these are examples
from AC Chiang. Let us take the example number 1. So beta ye kehta hai Q is given as 2 plus V square, right beta? And it says evaluate Q as V tends to 0. Beta, what does it mean V tends to 0? V tends to 0 का ये मतलब है that V is approaching 0. So how can something approach 0? Approach 0 का मतलब ये हो गया that you are going towards 0 from negatives also and positives also. Mane here this is -1, here I know this is +1. So but I am going towards 0. That means here I will have suppose minus 0.99, minus 0.98. Here I will have 0.99, 0.98 and so on. So from both the sides, my aim is to go towards 0 and see what happens. Right, beta? So what you can go ahead and do, one long method, so बहुत लंबा method होता है, what you can do is, you can go ahead and put -1, then you can put minus 0.9 and then minus 0.98, minus 0.5, minus 0.001. And you can keep checking where the value is going. And you will see that the value will continuously decrease to a certain value. Right, beta? So you need to check where that value is going. Similarly, you will go ahead and check where this value is going as you go ahead and approach 0 from this side. So you will check the value is continuously decreasing. एक तरीका ये है ना? And when you will put something very, very close to 0, this is 0.0001, minus 0.0001, you will see that the value is very, very close to 0, to 2, है ना? So what you can go ahead and do in this case is this. So limit V tends to 0, Q, इसका मतलब होगा बेटा limit V approaches 0, 2 plus V square. So instead of V, you can simply put 0. 0 actual में इसका मतलब ये नहीं है कि हम 0 पे evaluate कर रहे हैं. Please try and understand. The meaning is not that you are evaluating at 0. The meaning is that you are going towards 0. That is what is important in this case. That is what we are doing. So we are approaching 0. दोनों का meaning बहुत अलग है. I am not evaluating at a 0. I am approaching 0 from both the sides. But क्योंकि it will be very, ये वाला term है, ये बहुत close to 0 हो जाएगा. Imagine this ना, if I put 0.0001 whole square, it is very close to 0. If I put 0.00000001 whole square, it's even closer to 0. So this term will closely become, it will go very, very close to 0. इसीलिए इसकी जगह पे you can simply place 0 and you will get the answer. Clear हुआ मतलब इसका? Is everyone clear with it? अच्छा. So please remember that we tend to 0. We are not 0. We are not putting 0 in this case, but it is equivalent to that. ठीक है जी. अच्छा, take another question. हाँ बेटा. Question number 2. So you are given Q is equal to 1 minus V square upon 1 minus V, limit V tends to 1 to be evaluated Q. ठीक है बेटा? तो अब if I directly put 1 in this, अगर मैं इसमें 1 डाल दूं तो क्या होगा? Let's try that out. So I will get 1 minus 1 whole square upon 1 minus 1. So beta, this will be 1 minus 1 upon 1 minus 1, 0 by 0 form. 0 by 0 form को बोलते बेटा undefined. It is not defined. It is not defined. So in such cases, we need to somehow convert this before solving. कैसे convert कर सकते हैं? Very simple. So beta, we have a formula. A square minus B square can be written as A minus B into A plus B. So when I write 1 minus V square, beta isko I can write 1 square minus V square. 1 का square तो 1 ही है. So I can rewrite this as 1 square minus V square. So beta, this will be 1 minus V into 1 plus V.
So when I go ahead and I do 1 minus v square upon 1 minus v, what will I get? Numerator ko I can write it like this, and denominator will remain like this. Right, beta? So this will cancel out and I will be left up with 1 plus v. I will be left up with 1 plus v. Bas, now put the limit. So limit v tends to 1, evaluating q. इस q की value अब हमारे पास ये आ गई है. We have got this 1 plus v, है ना? So we can just write this as limit v tends to 1, 1 plus v. Beta, instead of v put 1, you will get the answer as 2. So the answer to this question should be 2. I hope all of you are clear with this. Answer will become as 2. Okay, beta? Acha. Let us take the next question. Question number 3. So beta, it is given q is equal to 2v plus 5 upon v plus 1. Limit v tends to infinity q. So bache, again, try to understand this thing. If I put this infinity and this also infinity, तो क्या हो जाएगा? 2 into infinity plus 5 upon infinity plus 1. Beta, infinity में कुछ भी, infinity means very large number. If you divide that very, very large number, if you add something to it, beta, it remains a very large number. So it will remain a very large number. Beta, again, infinity by infinity is not defined. अगर सिर्फ infinity answer हो, that is defined. So if supposedly it would have asked you this, तो बेटा ये आंसर करेक्ट था. Infinity is defined, but infinity by infinity is not defined. ठीक है बेटा? So this is not defined. So in such cases, what you can go ahead and do is the following. Divide. ध्यान से समझना बेटा. Divide by highest power of variable. But in this case, numerator and denominator have the same power. V का power same ही है 1. So I will divide by v. But supposedly यहाँ पर ना v square होता. Suppose this would have been v square. Then numerator and denominator को you should divide by v square. So you will divide it by the highest power. ठीक है? So beta, limit v tends to infinity 2v plus 5 upon v plus 1. What I will do? Divide by v. So if you divide the numerator by v and the denominator also by v, this is what will happen. So beta, can I write this as 2v by v plus 5 by v upon v by v plus 1 by v? So beta, this will be 2 plus 5 by v upon 1 plus 1 by v. So limit v tends to infinity 2 plus 5 by v upon 1 plus 1 by v. Beta, just put infinity. 2 plus 5 by infinity upon 1 plus 1 by infinity. Beta, anything by infinity is 0. ठीक है? So this will become 2 plus 0 upon 1 plus 0. So beta, this will be 2. So the answer to this question will be 2. What will be the answer to this question? 2. Everyone is clear with these questions? All these questions are part of your book. I hope you are doing the questions given in the book simultaneously. ठीक है बेटा? Okay. So now what we want to go ahead and do is we want to talk about intervals first. थोड़ा सा हमें पता भी है interval के बारे में, but I just want to tell you a little more. So बेटा, there are two kind of intervals, closed and open. When I talk about closed interval, means it includes the endpoints. And when I talk about open interval, it means that it excludes the endpoints.
So let me give you an example here. Huh? So beta, if I write x is between 3 to 5 and I have put this equal, matlab 3 is also included and 5 is also included. So beta, the interval will be 3 to 5 and both will be included. But suppose I have written that x is between 3 to 5. But 3 and 5 are not included now. So it will be 3, 5, but both will not be included. So you need to understand what the intervals mean. Okay, beta. So interval is basically closed or open, and it depends on what it depends on what definition we want to use where. कहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस पे हम इसको check करेंगे. ठीक है बेटा. Now, the next thing that you have to go ahead and realize is whenever we go ahead and we want to check, ये थोड़ा मैथमेटिक्स मतलब थोड़ा डेफिनेशनल है, ये एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, बट थोड़ा समझ लो इस चीज को कि जब भी हम बोलते हैं कि v approaches infinite approaches a number, ठीक है, तो हम बेसिकली उसका नेबरहुड चेक करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, डोंट वरी, ये डेफिनेशनल एग्जाम में नहीं आएगा. I will just explain shortly and we will move on to the next topic. ये थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट कॉन्सेप्ट है ना. तो बेटा सपोजिटली आई गो अहेड एंड आई टेल यू कि ये v की वैल्यूज है और डिपेंडिंग ऑन v आपकी वैल्यूज आ रही है q की, राइट बेटा. एंड आई टेल यू दैट व्हेन v इज n, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मतलब जैसे यहाँ था वी प्लग्ड v एज इंफिनिटी, तो q की वैल्यू 2 आई, राइट. So when v is n, suppose I tell you beta that we get a value of q and that value of q supposes l. So when इसका क्या मतलब हुआ that I am trying to approach n, v is approaching n from both sides. And as v is approaching n, then q is approaching l. Right beta? अच्छा समझो अब आगे थोड़ा सा. See, when I say that v is approaching n, तो मुझे एक इंटरवल में चेक करना चाहिए ना कि धीरे 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 वो n की तरफ आ रहा है. So I need to formulate an interval कि ठीक है, this is n minus b1, this is n minus b2, ये मेरा एक इंटरवल हो गया b1 का यहाँ पे b2 का यहाँ पे. एंड इस इंटरवल में आई एम चेकिंग कि what happens as I slowly go towards n. जैसे वहां पे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था कि what happened in that case is beta, we wanted to check what happens at 0, but we started with an interval. हमने -1 and 1 से शुरू किया और धीरे 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 हम 0 की तरफ सारी वैल्यूज डाल के देखते गए. We kept evaluating those values, right beta? अच्छा, same is the case here. You evaluate the value here, you evaluate the value here, और जब आपने इसकी वैल्यू n minus b1 पे इवैल्यूएट की, when you evaluated the value at n minus b1, the value you got here beta is l minus a1. Similarly, when you evaluated its value at n minus b2, the value you got here beta is l plus a2. Suppose l से बड़ी होगी ना और ये l से कम होगी, है ना. So you got l plus a2, l minus a1. तो ये इसके इंटरवल्स क्रिएट हो गए a2 and a1. क्लियर हुई ये बात? But this point itself is n, l. मतलब जब v n होगा तो q l होगा. Are you getting this? So what have we done? We have gone ahead and we have expressed things in an interval. We are saying that the interval in which q belongs, जो q की values है ये belong करेगी, that interval will be l plus l minus a1 to l plus a2. And when will this happen beta? When will the values belong in this region? When v belongs in this region, n minus b1 to n plus, not minus, n plus b2. Are you getting it? So this is just a way of expressing it. Don't worry, this will not come in exam. बिल्कुल ही नहीं आएगा. Okay, now we want to talk about inequalities. That is important. Okay, beta. So now try to understand. Inequalities, they come
and they they can be defined in multiple rules. In inequalities के ना बहुत सारे rules होते हैं. Just try to think first rule, huh? Tell me something, beta. If I tell you that 5 is greater than 4, and I tell you that 4 is greater than 3, doesn't that mean that 5 is greater than 3 also? That's the first rule. Beta, if A is greater than B, B is greater than C, तो A will be greater than C. ये पहला रूल हो गया है ना बेटा. अच्छा, सेकेंड रूल, यही सेम रूल but with equality. So if A is greater than or equal to B, B is greater than or equal to C, then A is greater than or equal to C. ये first rule हो गया. But a second thing, this is called as rule of addition and subtraction. Try to see. But suppose I tell you 5 is greater than 4. ये हम सबको पता है 5 4 से बड़ा होता है. So if I add 2 on both sides, won't 7 also be greater than 6? होगा ना? But if 5 is greater than 4, if I subtract 2 from both sides, won't 3 be greater than 2? होगा ना? So if A is greater than B, if you add K on both sides, so inequality remains unchanged. If you subtract K from both sides, then also inequality remains unchanged. So adding or subtracting does not change your inequality. Your inequality remains unchanged. ठीक है जी. अच्छा, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की. ये थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा. Try to see beta. Beta, if I say 5 is greater than 4, I multiply 2 on both sides. So beta 10 will also be greater than 8. ये तो ठीक है. But if I tell you 5 is greater than 4, beta suppose I multiply minus 1 on both sides. तो क्या minus 5 minus 4 से बड़ा है ना? You in the number line, you go like this. ये smallest होता है, ये largest होता है. So here you have 0. ये minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 1, 2, 3, 4. So beta, when you are going in this direction from small to large, so minus 5 is smaller than minus 4. So this gets altered. Minus 5 is smaller than minus 4. So beta, when I say A is greater than B, so if I am multiplying with a positive number, so inequality is unchanged. But if I am multiplying with a negative number, then inequality changed. Negative ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है. You can just say K is less than 0. Then inequality changed. Am I clear with this? Everyone is clear with this? Okay. Good. Now we talk about absolute values. Okay, beta, try to see this. An absolute value means that you are always getting positive values. मतलब negative values हमें नहीं लेनी है. We will always go ahead and take the positive values. That is absolute. So minus 4 का भी absolute 4 बन जाएगा और 4 का absolute भी 4 बन जाएगा. So minus 4 absolute value will be 4 and 4 absolute value will also be 4. So beta, in this case, we can go ahead and open this up. How can we open this up? We can go ahead and say that if I have mod of n, beta, this will be n whenever n is greater than 0. And it will be minus n if n is less than 0. And it will be 0 if n is equal to 0. ठीक है बेटा, क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसके बेसिस पे. So let's say my n is minus 15. तो बेटा कौन सा रूल लगेगा? That mod of n. इसका अगर मैं mod निकालूं, because n is less than 0,
it should be multiplied with the minus sign. So mod of n will be minus n minus of minus 15 मतलब plus 15. क्लियर हुई ये बात? तो मैं इस रूल के थ्रू चलूंगी कि अगर वो नेगेटिव वैल्यू है देन इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन टू मेक इट पॉजिटिव. राइट बेटा? सपोज आई टेल यू n is 14. तो बेटा what rule will be applied? This. That if n is positive then you write n as it is. तो बेटा mod of n क्या हो जाएगा? n, that means 14. क्लियर हुआ? बेटा if I tell you n is 0, so mod of n क्या हो जाएगा? 0. These are the rules that you have. Now, if I want to club inequality with absolute value, तो बेटा how can we club it? Mod of x less than n. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x will be between minus n to n. How will you open this up? X is between minus n to n. ध्यान से समझो, एग्जाम्पल लो बेटा. सपोज आई टेल यू x is mod of x is less than 4. Less than 4. तो बेटा अगर x minus 3 रहा होगा then also mod of x is 3 which is less than 4. अगर x 2 रहा होगा then also mod of x is 2 that is less than 4. अगर x 0 रहा होगा then also mod of x is 0 less than 4. So x कोई भी वैल्यू हो नेगेटिव या पॉजिटिव, इन सबका mod of x is coming less than 4 ना. When? Only when values are written between minus 4 to 4. Only when values are written between minus 4 to 4. Clear हुई ये बात? Okay. Now, try to understand another rule. Very important, beta. Mod of m plus mod of n will always be more than equal to m plus n mod. Always. Second, beta, mod of m into mod of n will be equal to m into n mod. Third, beta, mod of n by mod of n will be equal to mod of n m by n. ठीक है बेटा, let's take some examples. So this is example 3 of your book. बेटा m को ले लो 5, n को ले लो 3, तो m mod क्या हो जाएगा? 5 का mod, that means 5. n mod क्या हो जाएगा? 3 का mod, that means 3. बेटा m plus n क्या होगा? 5 plus 3, that means 8. So बेटा m plus n का mod क्या हो जाएगा? 8 का mod, that means 8. So m mod plus n mod क्या हो जाएगा बेटा? 5 plus 3 which is 8 and m plus n mod भी क्या हो जाएगा बेटा? 8. So both of them are equal. m mod plus n mod भी 8 है and m plus n mod भी 8 है. Both of them are 8. So these follow with equality. But suppose I tell you beta that m is 5, n is minus 3. So beta what is m mod? 5 mod 5. n mod minus 3 का mod 3. So beta what will be m mod plus n mod? 5 plus 3, that means 8. Beta what will be m plus n? 5 plus minus 3, 2. So beta what will be m plus n mod? 2 का mod 2. So do we see कि m plus n mod ये this is greater than m plus n ये. So in this case this is more. In this case these are equal. Right? These are equal. So either it can be equal or more. ये रहा आपका rule. Clear हुआ? Either it will be equal or more. अच्छा, take example.
4 of your book. Beta, it says m is 7, n is 8. So, बच्चे, what will be m mod 7, n mod 8? तो m mod into n mod कितना हो जाएगा? 7 into 8, 56. Beta, what will be m into n? 7 into 8, 56. So m into n का mod कितना हो जाएगा? 56 का mod. That means 50. Clear हो गया? Let's take another example. Beta, let's say m is minus 7, n is 8. तो m mod कितना हो गया? 7. n mod 8. तो m mod into n mod कितना हो गया? 7 into 8, 56. Right, beta? Acha, now tell me. Beta, what will be m into n? Minus 7 into 8, minus 56. तो m into n mod क्या हो जाएगा? Minus 56 mod, that means 56. This is also coming as 56. This is also coming as 56. Both of them are equal. Met with equality. Okay? Okay, beta. So I will go ahead and do one last thing for the day. That is called solution of inequality. And that will finish off this topic. Solution of inequality. थोड़ा सा समझते हैं इसे. So beta, suppose I say solve 3x minus 3 greater than x plus 1. कैसे solve करेंगे इसे? Beta, I want all x's on one side and all numbers on the other side. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? 3x minus 3, I can subtract x from both the sides. So what will happen? This will cancel out and 3x minus x will give me 2x minus 3 greater than 1. But I want all numbers on the other side. So what can I do? I can add 3 on both sides. Remember, addition subtraction से inequality unchanged रहती है. So minus 3 and 3 will cancel out. So 2x will be greater than 4. So beta, x will be greater than 2. That will be your answer. Clear हुआ? Okay, take next example. So beta, this says 1 minus x should be between 3 and minus 3. तो दो inequalities है जिनको हमें एक साथ solve करना है. So what can I do? I can subtract 1 from 1. Subtract 1 from all sides. Right, beta? So minus 3 minus 1 less than equal to 1 minus x minus 1 less than equal to 3 minus 1. So see that I have subtracted minus 1 from all sides. तो बेटा क्या हो जाएगा ये? minus 3 minus 1 will be minus 4. ये cancel out. This will be 2. Now, बेटा when I will, ये देखो यहाँ पे minus 1 आ रहा है ना? So I have to solve for x. So I must multiply with minus 1. Do you remember that whenever we multiply with k such that k is negative, यहाँ देखो, when you multiplied with k such that k is negative, तो inequality reversed. So ये यहाँ पे करेंगे. अगर मैं throughout minus 1 से multiply कर दूं, multiplying with minus 1, तो बेटा क्या हो जाएगा? minus 1 into minus 4 greater than equal to minus 1 into minus x greater than equal to minus 1 into 2. I have multiplied with minus 1 throughout. So inequality will be reversed. So beta 4x minus 2. So x will come between minus 2 to 4. And that will be the answer to this question. Everyone will solve all exercises till 6.5 of chapter 6. And you can go ahead and download our app, ArthaPoint. Right, beta? On that app, either app, and I will also try and get it posted on my website. I will go ahead and post solutions of AC Chiang.
exercises. You have to give me some time, huh? Give me some time, maybe by 2 or 3 days more. I will try and I will get this posted on the app and website. Everybody, please download the app ArthaPoint and try to continuously look out on the website. I will go ahead and post the solutions of AC Chiang also. So we have covered till beta 6.5 today, right, beta? The next thing that we have to go ahead and do is called limit theorems. And I think after limit theorems, continuity. Let me just see, huh? So दो ही parts बचे, limit theorems and continuity. Maybe in the next class, chapter 6 will be over. Okay, beta? Okay, thank you. Hello, good morning, everyone. But today we want to go ahead and we will try to finish off chapter number 6 of optimization. So this is going to be the last lecture, not of optimization as a whole, but last lecture of chapter number 6. Okay, beta? Acha, let's start. So I hope you're practicing along with me, and in the last class, I had taught you some inequalities. You had gone ahead and done those inequalities also. Huh? Okay, let's start. So I want to begin today's lecture by teaching you about limit theorems. Okay. But what is a limit theorem? In order to understand limit theorem, we start with the first theorem, theorem number 1. And this theorem says that, let's say that Q is a function and Q is equal to A, V plus B, right? And let's say that I want to go ahead and I want to approach V to N. And then beta, what will I do? I will just go ahead and say, find the value of Q as V approaches N. ये मुझे निकालना है. तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? I can say limit V approaches N and Q की जगह पे ना, I can just replace this AV plus B. हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा AV plus B. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? A. Instead of V, I can put N और B की जगह पे B ही. So the answer to this question will be A, N plus B. एक example लेके देखते हैं. Let's take an example. So suppose I tell you that Q is equal to 5V plus 7. And I ask you find limit V approaching 2 for Q. तो क्या करोगे बेटा? Limit Q की जगह पे instead of Q you will write 5V plus 7 and V will approach 2. Then beta, what will you do? Instead of V you will just put 2. तो क्या हो जाएगा? 5, 2 plus 7. So beta, this will be 17. And that will be the answer to this question. क्या answer हो जाएगा इसका? 17. Right beta? Okay, let's take the next question now. So in the next question, let's suppose that we have the next theorem, theorem number 2. So in theorem number 2, I'm saying that beta Q it is a function of V and this is just B. It's a constant. ठीक है? तो अब वो बोल रहा है कि क्या होगा जब लिमिट V tends to N Q होगा. तो बेटा Q तो सिर्फ एक कांस्टेंट ही था, इसमें कोई V तो आ नहीं रहा है. सो V को कहीं पे भी लेकर जाओ, टेक एनी वैल्यू ऑफ V, ये फंक्शन की वैल्यू तो ये कांस्टेंट ही रहेगी ना. सो वी कैन जस्ट राइट दिस एज लिमिट
v tends to n, b, and this will just give me b itself. Clear हुई ये बात? Right? Okay, beta. Theorem number 3. In theorem number 3, what can we do? We can say that suppose Q is equal to V. Right, beta? Q V के बराबर ही है. So now limit V tends to N. What will be the value of Q? So beta Q तो V के बराबर ही है. So instead of Q, I can just put V. So I will get limit V tends to N V. और जहां जहां V है वहां पे I have to replace it with N. So beta ये simply क्या हो जाएगा? N. So answer to this question will be N. ठीक है? अच्छा, let's take some question now. So suppose I tell you find limit V tends to 2Q when Q is given as V cube. ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं. Q की वैल्यू क्या दी हुई है? V cube. So instead of Q, I will put V cube. So what will I get? Limit V tends to 2 V cube. And then beta, instead of V, what will I put? I will put 2. So what will I get? 2 to the power 3. This will be 8. So the answer to this question will be 8. Clear? Okay. So now let's come to the next part and write down theorem involving two functions. So if I have two functions, how can we go ahead and how can we bring some theorems? ये हमें देखनी है. ठीक है बेटा? तो फर्स्ट थ्योरम जो आती है हमारी वो सम एंड डिफरेंस की आती है. सो लिमिट v टेंड्स टू n q1 प्लस q2. राइट बेटा? सो सपोज मैंने आपको बोल दिया है कि लिमिट v टेंड्स टू n q1 गिव्स यू l. लिमिट v टेंड्स टू n q2 गिव्स यू l2. तो बेटा इसमें क्या मैं क्या कर सकती हूँ? What can I do in this case? I can just open this up. So how can I open this up? I can say this will be limit v tends to n q1 plus limit v tends to n q2. इसको मैंने segregate कर दिया है. q1 को separate कर दिया and q2 को separate कर दिया. I've just separated it. बेटा इसकी value is already given to me as L1. इसकी value already given to me as L2. So I can just put an addition sign here. Similarly, if it was subtraction, तो ये subtract हो जाते, ये भी subtract हो जाते, and that is it. Is this clear to everyone? Okay. Now beta, suppose multiplication का rule देखते हैं. So now this is again another theorem. Suppose I tell you limit q1 q2 and here beta I have taken v tends to n. So this can be written as limit v tends to n q1 into limit ना spread हो जाती है, limit distributes. तो इसके साथ अलग limit लग जाएगी और इसके साथ अलग into limit v tends to n q2. And beta, what is the value of this, by the way? This is given to me as L1 and that is given to me as L2. So beta, just write that down. So this will be your L1 into L2. Clear हुई बात? अच्छा, now let's take one more theorem here. That theorem is for division. Same ही है, कुछ difference नहीं है. So if I say limit v tends to n q1 by q2, so beta you can just spread the limit and get limit v tends to n q1 upon limit v tends to n q2. So beta this part is given to me as L1 and this part it is given to me as L2. So it will be L1 by L2. Clear? Okay, I will give you some question, try to do them. So let's start. So you have to find limit v tends to 0, 1 plus v upon 2 plus v. So what did I teach you beta? That limit distributes. Distribute का क्या मतलब है? Distribute का मतलब ये हो गया that in case of limits, you can go ahead and apply it separately to the numerator and separately to the denominator. So apply कर देते हैं. So beta, this is going to give you limit
v tends to 0, 1 plus v upon limit v tends to 0, 2 plus v. So beta ये हो गया 1 plus, instead of v just put 0 upon 2 plus, instead of v just put 0. So beta this will be half. Clear? Okay. Now we want to do some limit of the polynomial. बहुत ही simple है. So example. Last theorem है बेटा, हाँ? So if I tell you that limit v tends to n, a naught, this is a naught. Limit v tends to n, a1 v. This is given as, तो v की जगह पे n लगा दोगे, a1 into n. Limit v tends to n, a1 v square. तो बेटा v की जगह पे फिर n a लगा दोगे. Suppose this is a2. So it will be a2 n square. Like this it will happen. But now beta if I ask you कि एक function है q and q is a naught plus a1 v1 plus a2 v square. a1 v plus a2 v square. Now I'm asking you find limit v tends to n q. तो बेटा ये क्या हो जाएगा? Limit v tends to n and q की जगह पे ये पूरी चीज आ जाएगी. So a naught plus a1 v plus a2 v square. बेटा I just told you limit distributes, तो इसके साथ अलग लग जाएगी, अलग लग जाएगी, अलग लग जाएगी. So limit v tends to n a naught plus limit v tends to n a1 v plus limit v tends to n a2 v square. And बेटा इसकी values तो मैंने पहले ही सिखा दी है, a naught a1 n a2 n square. So this will be a naught a1 n plus a2 n square. तो हमें polynomial की भी limit मिल गई. We have been able to get the limit of the polynomial also. Is this clear? Okay. So beta this is the concept of the theorems of the limits that we have just now ended. Huh? Now I want to talk about something else, which is called as continuity and differentiability of the function. So please लिख लो. Continuity and differentiability of the function. So beta we have learned enough about limits. Limits के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है. इन्हीं limits से, from these limits, you can find out the definition of continuity. Suppose I tell you that I have a function q and this is a function. Suppose ये जो q है, q is a function of v. ठीक है? And beta when v tends to n, limit v tends to n, तो देखो ध्यान से समझो जरा. So limit v tends to n, q में हम क्या करेंगे? Instead of v I will put n ना, so I will get g of n. ये मेरे को मिल जाता है. So it is said to be a continuous function at n when you go ahead and get this value. अगर यही value निकल के आती है, then it is said to be a continuous function. अभी समझेंगे, धीरे धीरे सब आएगा समझ में. When I will do some questions, हाँ? अच्छा, पहले कुछ definitions लिख लेते हैं, then things will seem easier. इसीलिए it is very important to understand that when I talk about n, then beta n must be in the domain of the function. ये पहली चीज है. Secondly, the function must have a limit. मतलब कि when limit v tends to n q करे, जो हमारा g of n आ रहा है, it must exist. So the limit must exist. And third, बेटा जो हम limit निकालते हैं, this limit must be equal to the value. जो हम जब v की value n की जगह put करते हैं, the limit must be equal to the value. So there are three things that must be satisfied और इन सब के बारे में मैं अभी आराम से बात करूंगी. Don't panic. Don't think कि ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा. No, don't worry. अभी I'm just trying to define something for you.
सो अभी हम बस डेफिनेशन लिख रहे हैं, वी आर जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन, नथिंग टू वरी। हाँ, तो हमने 3 चीजों के बारे में बात की है, वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 थिंग्स बेटा। जो पहली चीज हमने बोली है वो ये है दैट व्हाटएवर, जिस भी पॉइंट पे हम उसको टेंड कर रहे हैं, wherever v tends to n, that n must be in the domain of the function, वो हमारी पहली चीज है। दूसरी हम बोल रहे हैं लिमिट v tends to n q, it must exist, एंड जो लिमिट एग्जिस्ट करे इट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू g ऑफ n। ये तीनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही चीजें होनी जरूरी है, राइट बेटा? ओके, now let us go ahead and let us try to think of some examples of continuity and discontinuity, and accordingly you can understand these questions. ठीक है बेटा? So question number 1, let's say that q is equal to gv। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 4v square upon v square plus 1. This is the function given to you and it is said that it is defined, where it is defined from minus infinity to infinity. ठीक है? अब suppose it says that check continuity of function as v tends to n. तो ध्यान से समझो बेटा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? कहां डिफाइंड है ये? हर वैल्यू पे, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हर वैल्यू पे ये डिफाइंड है। सो इफ इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू, देन n तो एक नंबर ही होगा कोई ना, बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो इफ दिस इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू, देन आई कैन से इट विल बी डिफाइंड फॉर n ऑल्सो। अगर हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो उन वैल्यूज में से ही एक वैल्यू तो n रही होगी। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। भाई इफ दे वुड हैव सेड दैट, बेटा इफ दे वुड हैव सेड डोमेन इज 0 to 10, देन मेरा थॉट जाता कि व्हाट इफ n is 11, व्हाट इफ n is 12, व्हाट इफ n is 15। ऐसा तो नहीं बोला है। दे हैव सेड इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो इसमें तो n की कोई भी वैल्यू ले लो, you take any value of n, it will be defined. So n is within the domain. ये हमें क्लियर हो गया है that n is within the domain. Then beta second point, does the limit exist? So beta how did we check whether the limit existed or not existed? बहुत सिंपल था, you could have checked from left hand side and right hand side. तो नेगेटिव साइड से अप्रोच करो और पॉजिटिव साइड से अप्रोच करो। इफ यू गो टू द सेम वैल्यू देन लिमिट एग्जिस्ट्स, देन लिमिट एग्जिस्ट्स। तो यहां पर इफ यू हैव जस्ट रिमेंबर्ड व्हाट आई डिड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, क्लियरली इट इज विजिबल दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट। नेगेटिव साइड से एंड पॉजिटिव साइड से यू विल गो अहेड and you will get the same value. So the limit of the function exists. But what is the limit of the function? उसकी value क्या होगी? What will be that value? So in order to go ahead and do that, I must check the value. मैंने क्या लिखा? Limit v tends to n, and मैंने वहां पर अपना function डाल दिया. So what is my function बेटा? My function is given to me as 4v square upon v square plus 1. Can I apply the quotient rule here? हाँ, limits में हमने अभी quotient rule सीखा है. What does the quotient rule in limit says? That limit can distribute separately to the numerator and to the denominator. तो separately हम distribute कर देते हैं. So limit v tends to n 4v square upon limit v tends to n v square plus 1. तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 4, instead of v I will put n square upon n square plus 1. तो ये हो गया 4n square upon n square plus 1. But isn't this equal to gn? अगर मैं इस फंक्शन में डायरेक्टली v की जगह पे n लगा देती तो भी यही आता। ये तो बेटा लिमिट की थ्योरम से आया। But if I would have simply plugged n in this function, then also I would have got the same thing only, na? So I can say that this is equal to gn. So all my properties are satisfied. 1, n is in the domain. 2, limit exists.
3, it is equal, that limit is equal to the value of the function at n. So we can say that the function is continuous. But I will take one more example. Example number 2. This will require some practice. You have to practice it with me. Sirf tabhi samajh mein aayega. Okay, beta. So I will take one more example here. So supposedly the function given to you, it is beta v cube plus v square minus 4v minus v upon v square minus 4, right? And it is asking you that check whether this function is continuous or not, right? It is asking you check whether this function is continuous or not. So क्या करना है? At what values? So limit v tends to 2, evaluate the function q. क्या function evaluate करना है बेटा? Limit v tends to 2, evaluate the function q. तो क्या आ जाएगा बेटा? Limit v tends to 2, 2 cube plus 2 square minus 4 into 2 minus 4 upon 2 square minus 4. So beta, this will be 8 plus 4 minus 8 minus 4 upon 4 minus 4. Right, beta? So if I just solve this, I will get 0 by 0 form. So this function is giving me a 0 by 0 form. And since I'm getting a 0 by 0 form, it implies that this function is not defined at v is equal to 2. जब v 2 होगा, तो ये function की limit exist नहीं कर रही है. It is giving me a 0 by 0 form. So the function is not defined, right? अब बहुत ध्यान से समझनी है मेरी बात को, बहुत ध्यान से. Listen to me very carefully. But my function was v cube plus v square minus 4v minus 4 upon v square minus 4, limit v tends to 2. If I go ahead and I try to solve this function a bit, but isme se if I take this v common, v square common, I will get 4v plus 1. And isme se if I take 4 common, minus 4, I will get v plus 1 upon, this is the formula of a square minus b square. So that is nothing but a minus b into a plus b. So beta, it will be v minus 2 into v plus 2. So क्या हो जाएगा? v square minus 4 into v plus 1 upon v minus 2 into v plus 2. Actually, करने की जरूरत भी नहीं है. We can just keep the denominator as it is. V square minus 4. Here also I will just keep it as beta v square minus 4. This will cancel out. So I will be left up with just v plus 1. Now if I check its limit, it will give me 3. So listen to me. Limit exists. क्योंकि मैंने इस फंक्शन को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद जो इसकी वैल्यू आई वो डिफाइंड आई. सो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्टिंग, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, वो तो एक्चुअल फंक्शन में चेक करेंगे ना बेटा. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, बेटा, दैट इज कमिंग 0 by 0. So even though the limit exists, the value is not defined at that point for the function, original function, right? Original function. And even if you say that, okay, ma'am, I think that the value can be defined, 0 by 0 is not defined. And how do I know? Usse bhi important take point. The point is that beta 2 and minus 2 are not in the domain of the function. Whenever we have a rational number, जब भी हमारे पास एक rational number होता है, तो rational number क्या होता है? Anything in the p by q format
q not equal to 0. Denominator should not be equal to 0. But beta, here my denominator is v square minus 4. I don't want it to be equal to 0. So v square should not be equal to 4. So v cannot be equal to plus minus 2. So this function is defined for all values except plus minus 2. Except plus minus 2. So if this is not in the domain itself, this function cannot be continuous. But at the same time, you have to try to understand कि बेटा क्योंकि finally मैं एक limit में answer निकाल पाई हूँ. This is not given in the book, this thing, but it is called as removable discontinuity. हम इसकी discontinuity को जो 0 by 0 form था उसको हटा पाए. So it becomes a removable discontinuity. I want to write this down. This is very important. So please write it with me, beta, that this function, which is, it is not defined. When is this not defined, beta? At v is equal to 2 and v is equal to minus 2. Why? Because these values are not in the domain of the function. ये values function के domain में ही नहीं है. They are not in the domain of the function. So although limit exists, v tends to 2, q की limit exist कर रही है. I am getting the answer as 3. Similarly, when you will tend limit v tends to minus 2, v plus 1 करोगे, you will get minus 2 plus 1, that means minus 1. So limit is existing, but the function ka value is not in the domain itself. Minus 2 and 2 are not in the domain. So if they are not in the domain, then I cannot say that the function is continuous. ये clear हो गई ये बात एकदम. Okay. Now beta, I want you to go ahead and I want you to do one more numerical with me. So this is from the back exercise of this AC Chiang. Okay. So you are given that Q is equal to GV, and this is defined as V square minus 7V minus 3. Kya questions hai beta? Part A. Find limit of Q as V tends to N. Second, check whether it is equal to Gn. Beta, this is exercise 2, huh? Question number 2. And third, check continuity. करके देखते हैं एक बारी. So check limit of Q as V tends to N. तो कैसे करेंगे? Limit V tends to N GV. GV. What is that, beta? This function. So limit V tends to N V square minus 7V minus 3. What rule will you use? I've already explained you polynomial rules, na? Polynomial rule of limit today. So beta, just distribute the limit. Limit V tends to N V square minus limit V tends to N 7V minus limit V tends to N 3. तो बेटा ये हो जाएगा n square. Instead of v put n minus this will be 7n minus this is a constant, इसकी limit as it is रहेगी 3. ठीक है. Now beta, what is the function given to you? So this is first part. Second part, what is the function given to you? Function is given to you as v square minus 7v minus 3. So second part क्या बोल रहा है? Check what will be Gn. So instead of v मुझे n लिखना होगा हर जगह पे. So if instead of v I write n everywhere, what will I get? N square minus 7v minus 3. Are these two the same? Yes. So limit exists. Then beta, limit is equal to the value of the function. And n is in the domain. ये function हर value के लिए defined होगा. It's a general function. There is nothing in the denominator. ये एक polynomial function है. It should be defined for all values of n.
So beta n is in the domain, limit is existing, value of limit is equal to that at n. All three properties are satisfied. So is it a continuous function? It is a continuous function. It is a continuous function. Homework. From these back exercises, you have to do question 3 and question 4. Everyone will do question number 3 and question number 4 because this is very important and it will come in exam. ये तीनों चीजें ही check करनी होंगी. Next class, I will come up with some extra questions, exercise questions. So better for now, you have to check all these 3 things. क्या-क्या check करना है? N should be in the domain. Limit of the function should exist. And it should be equal to the value of the function at n. ठीक है? Okay, beta. Thank you. Hi, good evening, everyone. In today's class, beta, we will start with chapter 7 of AC Chiang. This is lecture 1 of chapter number 7. And we are going to go ahead and we are going to talk about the rules of differentiation and their use in comparative statics. तो ध्यान से देखते हैं बेटा. आज के लेक्चर में हम 2 चीजों की बात करने वाले हैं. जो पहली चीज, the first thing that I'm going to talk about, बेटा, that is going to be your the constant function. हाँ, उसको क्या बोलते हैं? Constant function. So constant function क्या होता है बेटा? Any function is called as a constant function when we are able to go ahead and when we are able to write it like this. जैसे when I go ahead and I write like this ना, कि suppose y is equal to 4, y is equal to 5. एक constant number जब हम लिखते हैं, when we write as a constant number, that is called as a constant function. जो दूसरा फंक्शन आज की क्लास में पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ पावर फंक्शन. पावर फंक्शंस बहुत सिंपल है. जैसे अगर मैंने लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ. जब हमने पावर लगा दी, व्हेन वी पुट सम पावर हियर बेटा, तो इसको हम बोल देते हैं पावर फंक्शन. दैट इज कॉल्ड एज अ पावर फंक्शन. कभी कभी पावर फंक्शन के आगे कोई कांस्टेंट भी लग जाता है. समटाइम्स यू विल सी अ कांस्टेंट जस्ट बिफोर द पावर फंक्शन. जैसे अगर यहाँ पे बेटा 4 लग जाए, 5 लग जाए, 7 लग जाए, 8 लग जाए, कुछ नंबर लग जाए, देन दिस इज अ पावर फंक्शन. बट ये किसी कांस्टेंट के साथ हो जाता है. इट कम्स विद सम कांस्टेंट. तो हम इन तीनों ही फंक्शंस को आज पढ़ने वाले हैं. When y is a constant, when y is a power function, and when it is power function multiplied with some constant. ठीक है बेटा, पहला देखते हैं हम. Whenever y is a constant, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है. This is the first rule. अगर मैं बोल दूं y is equal to 4, y is equal to 5, y is equal to 7, y is equal to a, y is equal to m, y is equal to g. बेटा x तो कहीं नहीं आ रहा ना. x is not coming anywhere. x is not coming anywhere. तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, whenever we will differentiate this with respect to x, क्योंकि x कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. its differentiation will be 0. तो अगर हम बोलते हैं कि y equal to some k है, और फिर हम क्या बोल देते हैं बेटा कि हमें अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो y इक्वल टू सम k है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो बेटा k के साथ कोई भी x तो नहीं आ रहा ना. तो अगर x आ ही नहीं रहा तो उसका डिफरेंशिएशन वुड बी 0. इफ नो x इज कमिंग, इट्स डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी 0. तो यही हमने यहाँ पे किया है कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 हो जाता है. बेटा व्हेन आई विल राइट दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, जब हम ऐसे लिखते हैं ना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो या हम इसको dy by dx लिख सकते हैं या हम इसको f डैश x लिख सकते हैं. ये ऊपर जो देख रहे हो ना लाइन छोटी सी,
This line means you are differentiating. It means you are differentiating. अच्छा, differentiation क्या होता है वो हमें पता है अब. What is differentiation? Differentiation बताता है कि y कितने से change होगा जब x change होगा. When x will change, by what amount will y change? y कितने से change होगा जब x change होगा. तो बेटा एक बात बताओ, जब y एक कांस्टेंट ही है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि y की वैल्यू तो 10 है, तो x को आप 1 कर दो या x को चेंज करके 2 कर दो या x को चेंज करके 4 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? y को तो आपने कांस्टेंट कर दिया ना, y को तो आपने फिक्स कर दिया 10 पे, यू हैव फिक्स्ड इट एट 10. विल इट बी अफेक्टेड ना? तभी जब एक कांस्टेंट होता है, सो वी गेट dy by dx as 0. मतलब x के बदलने पे y नहीं चेंज होगा. y will not change when x changes. That is the differentiation of a constant. अच्छा बेटा, ये d by dx जो हम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर सिंबल. क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटर सिंबल. दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर सिंबल. बेटा अगर मैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को फॉलो करूं, इफ आई फॉलो द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. यही है ना? अगर मेरे को डिफरेंशिएशन को फॉलो करना है, उसके डेफिनेशन को फॉलो करना है, सो इट सेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. बेटा आई एम गिविंग यू 1 minute. Can you try this yourself? 1 minute इसको try करके बताओ जरा. How will you define this differentiation in this definition? Okay, now let's see this, huh? So beta, this is, suppose मैंने आपको बोल दिया that my function is some value. मैंने आपको कोई एक वैल्यू दे दी बेटा. I am telling you that my function is k. So अब क्या हो जाएगा बेटा? The value function minus f of n upon x minus n and x is tending to n. x n को अप्रोच कर रहा है और मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन अपॉन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू. थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. मैंने क्या बोला बेटा? मैं बोल रही हूं आपको कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है k पे. ये फंक्शन की वैल्यू फिक्स्ड है k पे. तो चाहे आप x को 1 मान लो तो भी फंक्शन की वैल्यू k आती है, मतलब y की वैल्यू k आती है. चाहे आप x को 2 मान लो तो भी y की वैल्यू k आती है. चाहे आप x को n मान लो तो भी y की वैल्यू k ही आती है. वैल्यू ऑफ y इज नॉट चेंजिंग. y की वैल्यू k ही है. तो यही हमने लिखा है कि बेटा फंक्शन की वैल्यू एट x माइनस फंक्शन की वैल्यू एट n अपॉन x माइनस n. अब हम पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा ही k है और इस फंक्शन की वैल्यू n पे भी k ही है. तो बेटा ये क्या हो गया? 0 अपॉन x माइनस n ना, मतलब 0. तो दिस इज अ प्रूफ दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सबको ये बात क्लियर है? हाँ बेटा. अच्छा, अब हम बात करते हैं एक पावर फंक्शन की. सपोज बेटा आपको दिया हुआ है y इज x टू द पावर n. So how can we solve these power functions? बेटा पावर जो है वो नीचे आ जाती है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं and power reduces by 1. So how can we solve this? Everyone tell me. When I will differentiate it, the power will come down and power will reduce by 1.
power will come down and power will reduce by 1. Let's say example beta. Y is equal to x cube. So what will happen beta? The power will come down and power will reduce by 1. So if I were to solve this, dy by dx will be power will come down and power will reduce by 1. तो मैंने क्या किया? How did I differentiate it? 3 comes down and this becomes 3 minus 1. So 3x square. Beta, look at the next example. Y is equal to x to the power 9. So dy by dx will be what? Beta, power will come down, power will reduce by 1. 9x to the power 8. Beta, y is equal to x to the power 0. इसको करने के दो तरीके. There are two ways. Y is x to the power 0. मतलब anything to the power 0 is 1. So y is equal to 1. तो y एक constant हो गया. So what will be dy by dx beta? 0. Constant का differentiation is 0. There is another way. Beta, if I tell you y is x to the power 0, power will come down, power will reduce by 1. Beta, 0 into anything is 0. तो भी ये 0 हो गया. So these two are the methods to solve it. Let's look at the next one. So y is x to the power minus 3. तो करो बेटा. What will be dy by dx? Beta, power will come down, power will reduce by 1. Minus 3x to the power minus 4. Beta, जब भी negative power होती है, whenever you see negative power, then that will go in the denominator. So if I will write x to the power minus 4, this will be 1 by x to the power 4. So this will be minus 3 by x to the power 4. Is this clear? ठीक है बेटा, अब देखो. This says y is equal to root x. Root x का क्या मतलब है? X to the power half. So beta, power will come down, power will reduce by 1. So half x to the power half minus 1, half x to the power minus half. What did I say? Whenever you have negative power, it will come in the denominator. तो denominator में ले आते हैं बेटा half x to the power. Is this clear? Okay beta. Now let's look at this. Y is equal to c x to the power n. तो dy by dx will be what beta? C तो constant है, उसको छोड़ दो अलग से. Power will come down, power will reduce by 1. So it will be cn into x to the power n minus 1. Clear हुई ये बात? ठीक है बेटा, take this example. You are given that the function is 4x cube. इसका differentiation निकालना है. What will you do? Power will come down, power will reduce by 1. 12x square. हाँ बेटा. ठीक है बेटा, these are your exercise questions that are given just after the exercise. देख लेते एक बारी. So what will be dy by dx? Power will come down, power will reduce by 1. Beta, look here. Power will come down, 5 नीचे आ गया. Power will reduce by 1. 7 into 5 हो गया 35. हाँ बेटा. Look at the next question बेटा. इसको differentiate करना है with respect to u. Here my variable is u. हाँ बेटा. So what will happen? Power will come down, power will reduce by 1. So बेटा ये हो जाएगा 2 minus 2 u to the power minus half. Minus 2 u to the power half in the denominator. Beta, do the next question. This is a constant. So differentiation of constant will be 0. हाँ बेटा. Look at the next question. ये w and u के बीच में है. So you have to find dw by du. So beta, power will come down, power will reduce by 1. So what will happen?
minus 3 u to the power minus 2 minus 3 by u to the power 2. It is a negative power, na? It will come in the denominator. ठीक है बेटा, do the next question. Power will come down, power will reduce by 1. ये multiply हो रहे हैं, हाँ? So this will be u to the power minus 3 by 4. 1 by u to the power 3 by 4. Beta, look here now. This is just differentiation only, na? So I have to differentiate this. तो कैसे होगा dy by dx बेटा? Power will come down. This is my power, minus 4. And power will reduce by 1. हाँ बेटा. This will be 4x to the power minus 5. So 4, 1 by x to the power 5. Take the next one. Power will come down. Power will reduce by 1. So 5 into 4 is 20. W to the power 3. Look at the next one, beta. A is a constant. Power will come down. Power will reduce by 1. So it will be AB u to the power B minus 1. Look at the next question, beta. Power will come down. Power will reduce by 1. So 3x to the power minus 2 by 3. So because this is negative power, I will bring it in the denominator. Take the next question, beta. Power will come down. Power will reduce by 1. So 2 into c is 2c into x. Look at the next one. Power will come down. Power will reduce by 1. So minus ab into u to the power b minus 1. Now it says find f dash at 1. मतलब x की value हमें बाद में 1 डालनी पड़ेगी बेटा. fx is given as 18x. So what will be f dash x? So 18 तो constant है. X का differentiation कैसे करोगे बेटा? This is x to the power 1 ना. So power will come down. Power will reduce by 1. So 18 x to the power 0. Anything to the power 0 is 1. So 18 हो गया. So बेटा f dash x क्या हो गया? f dash x is 18. If f dash x is 18, तो अब अगर मैं x की जगह पे 1 भी डाल देती हूँ, will my answer change? No, क्योंकि x तो है ही नहीं ना यहाँ पे अब. So even if I put that as 1, answer will not. बेटा एक और देखते हैं. You are given f dash fx is 3 by 4, x to the power 4 by 3. It says find f dash 2. तो बेटा क्या होगा? Power will come down. Power will reduce by 1. So beta this cancels off. X to the power 1 by 3. 4 by 3 minus 1 is 1 by 3 ना. तो ये हो जाएगा मेरा f dash x. Beta it says find f dash x at x equal to 2. So x की जगह पे 2 put कर देते हैं. So this is your answer. At x equal to 2. Is this clear? So this is the end of the first part of chapter number 7. I will meet you again with the next session. Okay, beta. Thank you. Hello, good evening, everyone. Beta, in the last class that I had taken on optimization, we had gone ahead and we had started with chapter 7. And I have done the first part of chapter 7 where we talked about the rules of differentiation. So now I'm going to begin with
7.2 now, and we are going to talk something more about the rules of differentiation. थोड़ी सी और बात करते हैं differentiation के rules के बारे में. So if you remember, let's say now that you are given, अब हम बात करने वाले बेटे sum and difference rule के बारे में. Sum difference rule. So let's say कि आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, हाँ. So you are given a function fx and you are given a function gx. और इन दोनों फंक्शंस को ना ऐड करके आपको बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या कर सकते हो, आप पहले का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, दूसरे का निकाल सकते हो और उसको फिर ऐड कर सकते हो, या आप पहले उन फंक्शंस को ऐड कर सकते हो और फिर उनका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो. दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा. दोनों से ही जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास एक फंक्शन है fx जो 5x to the power 3 है, और आपके पास एक फंक्शन है gx जो 9x to the power 3 है. अब ये रूल क्या बोलता है कि चाहे आप पहले फंक्शंस को ऐड करके फिर डिफरेंशिएट कर दो, या पहले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके फिर ऐड करो, दोनों से ही जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली सेम, दोनों ही आपको सेम रिजल्ट देंगे. तो देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं पहले फंक्शंस को ऐड कर देती हूँ fx प्लस gx, तो ये हो जाएगा क्या, 5x क्यूब प्लस 9x क्यूब. तो बेटा 5 प्लस 9 हो गया 14x क्यूब. अब मैं इसको तो ये मेरा एक नया फंक्शन बन गया सपोज u. अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल जाएगा 14. ये x क्यूब है ना बेटा, तो 3 will come down and x का पावर will reduce by 1. तो बच्चे this will become 14 into 3x square. That means ये हो गया 42x square. हाँ बेटा. अच्छा, अब मेथड 2 क्या बोलता है कि पहले मैं इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दूं. तो मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है fx, वो बच्चे दिया हुआ है 5x क्यूब, और जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है gx, वो मुझे दिया हुआ है 9x क्यूब. तो बेटा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूं तो पावर विल कम डाउन एंड पावर विल रिड्यूस बाय 1. तो बेटा इसकी पावर विल कम डाउन, 3 नीचे आ गया, x की पावर 1 कम हो गई, सो 2. हाँ बेटा, एंड यहाँ पे जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बच्चे, तो 3 विल कम डाउन एंड x का पावर 1 से रिड्यूस हो गया, सो 2. तो बेटा ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, ये हो जाएगा 27x स्क्वायर. अब मैंने इनको ऐड कर दिया, तो जब मैंने f डैश x प्लस g डैश x किया बच्चा, तो आ गया 15x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर. हाँ बेटा, सो दिस इज ऑल्सो 42x स्क्वायर. तो वेदर यू फर्स्ट ऐड and then differentiate or you first differentiate and then add, दोनों से ही जो रिजल्ट मिलता है वो exactly same आता है. Both of them will give you the same result and that is the rule that we are talking about. क्लियर हो गई ये बात एकदम? ठीक है बेटा. अब इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं. तो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एसी चियांग में. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 13x क्यूब माइनस x क्यूब, तो बेटा क्या मतलब हो गया इसका, पहले हम ऐड करें फिर डिफरेंशिएट करें या पहले डिफरेंशिएट करें फिर ऐड करें, एक ही बात है. तो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट कर दूंगी, तो बेटा पावर विल कम डाउन और पावर विल रिड्यूस बाय 1. ठीक है बेटा, पावर विल कम डाउन, तो 3 नीचे आ गया, और पावर विल रिड्यूस बाय 1. बेटा पावर विल कम डाउन, पावर विल रिड्यूस बाय 1. तो बेटा ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 39x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 39 प्लस 3, दैट मीन्स 42x स्क्वायर. इसमें मैंने पहले इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया है. आई हैव डिफरेंशिएटेड देम इंडिविजुअली. समझ में आ रही है बात? बेटा पहले मैं इनको ऐड भी कर सकती थी. सो 2x क्यूब प्लस 13, दैट मीन्स 15x क्यूब माइनस 1, तो 14x क्यूब हो गया.
तो मैं अगर पहले इनको सॉल्व कर देती तो यहाँ पे आता 14x3, और अगर मैं इसको फिर डिफरेंशिएट कर देती तो बेटा पावर विल कम डाउन एंड पावर विल रिड्यूस बाय 1, तो भी मुझे 14x² ही मिलता। तो दोनों से ही मुझे सेम आंसर ही मिलेगा, आई विल गेट द सेम आंसर। बेटा अब इसी को हम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कॉस्ट फंक्शन गिवन होता है, एंड फ्रॉम दिस कॉस्ट फंक्शन वी हैव टू गो टू द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। हमें इससे मार्जिनल कॉस्ट की तरफ जाना होता है। ठीक है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? मार्जिनल कॉस्ट ये बताता है कि कॉस्ट कैसे चेंज होगी जब आउटपुट चेंज होगा। जब मैं आउटपुट को इंक्रीज करूंगी तो मेरी कॉस्ट कैसे चेंज होगी, वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन डिपिक्ट करेगा। हाँ बेटा, तो अब यहां पर हमें ध्यान से समझना है। जैसे अगर आपको गिवन है कि बच्चे गिवन है कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये है, क्यू माइनस 4q² प्लस 10q प्लस 75, ये आपका कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है बेटा, और ये बोल देते हैं आपको कि फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का क्या मतलब हो गया? मार्जिनल कॉस्ट का ये मतलब हो गया कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट कैसे चेंज होगी जब आपका आउटपुट चेंज होगा। जब आपका आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपकी कॉस्ट कैसे चेंज होगी, हमको इसमें ये क्लियर हुई बात। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा पावर विल कम डाउन एंड पावर विल रिड्यूस बाय 1, सो ये हो जाएगा 3q² माइनस 4। अब q² का डिफरेंशिएशन देखो, पावर विल कम डाउन, पावर विल रिड्यूस बाय 1। हाँ बेटा, क्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 10 प्लस 75। बेटा इसको मैं सीधा 1 लिख रही हूँ, पावर विल रिड्यूस बाय 1 हो गया ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3q² माइनस 8q प्लस 10, सॉरी 75 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 10। तो बच्चे ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस करो कि जब ना कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं ना तो इसमें ये एक फिक्स्ड कंपोनेंट होता है। हाँ बेटा, इस फिक्स्ड कंपोनेंट को वी कॉल दिस एज फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। दिस फिक्स्ड कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्यू, यहां पे कोई क्यू नहीं आ रहा, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। और जैसे ही हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो ये फिक्स्ड कंपोनेंट ड्रॉप हो जाता है, ये फिक्स्ड कंपोनेंट हट जाता है क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन 0 है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कंपोनेंट नहीं है। सो मार्जिनल कॉस्ट डजंट कंटेन एनी फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है मार्जिनल कॉस्ट में। क्लियर हुई बात है बेटा? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि हमें दो अलग फंक्शंस गिवन होंगे, एक fx और एक gx, और हमारा एम ये है कि हम इसको, इस जो भी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है इसको हम डिफरेंशिएट करके इसका आंसर निकालें। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन fx इंटू gx, और एम क्या है? एम है कि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें। दो अलग फंक्शन दिए हुए, कुछ भी हो सकते हैं फंक्शन। जैसे बेटा मैं आपको बोल दूं कि fx है x² और gx मैंने आपको कुछ एक फंक्शन दे दिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया gx हो गया e⁻x, या मैंने आपको बोल दिया कि बच्चे fx तो है x+1 और gx हो गया x⁻3। दो फंक्शन है, दो अलग फंक्शन है, दोनों में x अवेलेबल है, दोनों में ही x का कुछ कंपोनेंट है, और मैंने आपको बोल दिया कि अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ।
तो बेटा क्या करेंगे हम इसमें, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? तो जब भी दो फंक्शंस गिवन होंगे बच्चे, तो हाउ विल बी डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड एज इट इज, सेकंड को नहीं छेड़ना, प्लस पहले फंक्शन को ऐसे ही रखोगे और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। दैट इज हाउ वी यूज द प्रोडक्ट रूल। एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपका एक फंक्शन है जो दिया हुआ है 2x + 3 इंटू 3x²। बेटा मैंने आपको बोल दिया फाइंड dy/dx, आपको इसको डिफरेंशिएट करना। तो अब इसमें दो फंक्शंस हो गए, एक तो ये फंक्शन हो गया और एक तो ये फंक्शन हो गया। तो हम dy/dx कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने सीखा, पहले हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा 2 को मैंने ऐसे रखा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और दूसरे फंक्शन को हमने छेड़ना भी नहीं है, तो उसको हमने 3x² एज इट इज रख दिया, प्लस फिर हमने फर्स्ट फंक्शन को नहीं छेड़ा, उसको हमने एज इट इज रखा, और सेकंड फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा 3 तो एक कोएफिशिएंट है, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर नीचे आ जाएगी और x की पावर 1 से कम हो जाएगी, सो 2 - 1 1। तो बच्चे ये क्या बन गया? 2 इंटू 3x² प्लस 2x + 3 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 6x। अब इसको हम ओपन कर लेंगे बेटा, तो ये हो गया 6x² प्लस 12x² प्लस 18x। तो बच्चा ये बन गया हमारे पास 18x² प्लस 18x, और ये इसकी डिफरेंशिएशन हो गई। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड एज इट इज, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट एज इट इज। अब बेटा इसी पे ही हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन वाला कोर्स क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट्स से दैट यू आर गिवन समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको एग्जाम में, दैट एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, AR क्या होता है बेटा? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब कि कितना रेवेन्यू ऑन एन एवरेज एक ऑर्गेनाइजेशन कमाती है। तो एवरेज रेवेन्यू आपको 15 - Q दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। आपको बोला गया है कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। अब ध्यान से समझना बात को बेटा, एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बच्चे ये हो गया 15 - Q डिवाइडेड बाय Q, सॉरी ये हो गया AR की जगह पे हम लिखेंगे 15 - Q इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। आपको एवरेज रेवेन्यू पहले ही दिया हुआ है, और एवरेज रेवेन्यू की जगह पे मैंने 15 - Q रिप्लेस कर दिया है। अब बेटा यहां से अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालना चाहूं तो वो क्या निकल जाएगा? 15 - Q इंटू Q, ये Q यहां चला जाएगा, तभी तो टोटल रेवेन्यू निकलेगा। सो टोटल रेवेन्यू विल बी नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 15Q - Q², ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल का मतलब हो जाता है टोटल का डिफरेंशिएशन, हमेशा याद रखना, जहां पे भी मार्जिनल पूछे वहां टोटल को डिफरेंशिएट करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा हाउ टोटल रेवेन्यू चेंजेस एज क्वांटिटी चेंजेस। तो हमने क्या करना है ना, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है Q के रिस्पेक्ट में। तो बच्चा 15Q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 15, और Q² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर विल कम डाउन, पावर विल रिड्यूस बाय 1 2Q। तो ये हो जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर। अच्छा अब इसमें क्या है ना कि अगर आप नोटिस करो, ये थोड़ा सा समझने की बात है, ध्यान से देखो बच्चे, तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू लिखा था ना, वो लिखा था 15 - Q, और जो मार्जिनल रेवेन्यू लिखा है ना, वो लिखा है 15 - 2Q।
तो बेटा अगर मुझे AR को प्लॉट करना होगा वो ऐसे प्लॉट होगा। जैसे इसकी प्लॉटिंग देखो, जैसे अगर मैंने बोला कि Q को 0 रखो तो AR की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15, है ना, तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। और अगर मैंने AR को 0 लिख रखा तो Q की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो यहाँ पे भी 15 आ गया। बट अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी ना, तो जब Q को 0 करेंगे तो MR भी 15 ही होगा। बट अगर मैं यहाँ Q ले रही हूं, बट अगर बेटा MR को 0 रखेंगे तो Q की वैल्यू 7.5 आएगी, माने यहां पे ऐसे आएगी। तो इसमें बुक ये बोलती है कि अगर आप इनको ग्राफिकली शो कर सकते हो, अगर आप MR और AR को ग्राफिकली देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो MR है वो, उसका जो स्लोप है वो AR के स्लोप से ट्वाइस है। और स्लोप कैसे निकलता है, जब हम AR को फिर से Q से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर मैं इसको Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ -1 आएगा, और अगर इसको Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो बेटा इसका कोएफिशिएंट क्या है -2 ना, तो यहाँ -2 आएगा। तो ये इसके डबल है। बस इतना ही है, अगर आपको ग्राफिकली समझना हो, नहीं समझना तो ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो जहां पे हम इसकी ग्राफिकल इंप्लीकेशन कर रहे हैं। अब बेटा आगे हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि क्वोशिएंट रूल क्या कहता है। तो जैसे अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि आपके पास दो फंक्शन गिवन है, बट अब हमारे फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, कि एक y है जो fx बाय gx है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको अब आप डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगी बेटा, ध्यान से सीखो। डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर into denominator as it is minus differentiation of denominator into numerator as it is upon denominator का होल स्क्वायर, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। क्लियर हुई ये बात? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी। एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो फंक्शन गिवन है वो है 2x -3 अपॉन x+1, और मैं बोल रही हूं कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर। तो डिफरेंशिएट करो 2x-3 को, बेटा 2 एज इट इज कोएफिशिएंट है, x की डिफरेंशिएशन हो गई 1, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो गई 0, डिफरेंशिएशन हो गया न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर को आप यहां पे लगा दोगे माइनस, बेटा x की डिफरेंशिएशन होती है 1 और 1 की डिफरेंशिएशन होती है 0, ये मैंने डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन की है, इनटू न्यूमरेटर को आप एज इट इज रख दोगे, अपॉन डिनोमिनेटर को आप होल स्क्वायर कर दोगे। हाँ बेटा क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 2x+1 माइनस 2x-3 अपॉन x+1 होल स्क्वायर। बेटा इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं आगे, 2x+2 माइनस 2x+3 अपॉन x+1 होल स्क्वायर। तो बच्चे ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन x+1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब सबको 7.2 एक्सरसाइज एसी चियांग की सॉल्व करनी है। आई होप दैट यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड सॉल्व दैट। एक क्वेश्चन मैं कोई रैंडमली पिक करके देख लेती हूँ। लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। तो ये 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोलता है ये देखें जरा। ये बोल रहा है कि आपका टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है वो दिया हुआ है c इज इक्वल टू 3q² प्लस 7q प्लस 12, और ये बोल रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, एंड ये भी बोल रहा है कि हमें इनको ग्राफ भी करना है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। तो बच्चे मार्जिनल कॉस्ट क्या सिखाया मैंने, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो बेटा ये हो जाएगा 6q प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन। बेटा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी,
तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 7q प्लस 12 डिवाइडेड बाई q। तो बच्चे यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 3q² डिवाइडेड बाई q, 7q डिवाइडेड बाई q, 12 डिवाइडेड बाई q। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 7 प्लस 12 बाई q। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी आ गई है और हमारे पास एवरेज कॉस्ट भी आ गई है। अब आपको इन दोनों को ही प्लॉट करना होगा। बेटा ध्यान से समझो कि अगर मेरी क्वांटिटी 0 होती है, इफ Q इज 0, अगर मैं Q को यहाँ पे 0 पुट इन करूं तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आएगी 6 इंटू 0 प्लस 7 यानी कि 7। और जैसे जैसे मेरी क्यू बढ़ता जाएगा, मतलब अगर मैं क्यू को 1 पुट कर दूं तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 7 यानी कि 13। बेटा अगर मैं क्यू को 2 पुट कर दूं तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट और ज्यादा हो जाएगी, 6 इंटू 2 प्लस 7 यानी कि 12 प्लस 7 यानी कि 19। तो मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट इस केस में बन रही है वो ये है कि जब मेरी क्वांटिटी, लेट मी जस्ट प्लॉट इट प्रॉपर्ली, कि बेटा जब हमने क्वांटिटी को 0 लिया, व्हेन क्वांटिटी इज 0, तब मार्जिनल कॉस्ट आई 7, तब मार्जिनल कॉस्ट आई 7। फिर जब क्वांटिटी 1 ली तब वो 13, फिर 19, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मेरा मार्जिनल कॉस्ट का बन गया। ये बेटा मेरा एमसी हो गया। क्लियर हुआ? अब इसी बिहाफ पे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, आप प्लीज टोटल कॉस्ट भी एक बार प्लॉट करके देखो। सॉरी एवरेज कॉस्ट। हाँ बेटा, तो क्यू को लेना 1, 0 तो नहीं ले सकते हो क्योंकि क्यू डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो बच्चे क्यू को 1 लोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 12, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 22। बच्चे जब क्यू को 2 लोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 प्लस 6, यानी आपकी कॉस्ट हो जाएगी 12 प्लस 7 यानी 19। माने आपकी कॉस्ट गिर रही है पहले, है ना? तो बेटा आई एम लीविंग इट अप टू यू। एक बार इसको प्लीज एवरीबडी विल प्लॉट दिस एंड चेक कि क्या आपका एसी यू शेप बन रहा है या नहीं। ओके बेटा, तो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। In the next class, I will take the next section, which is 7.3. Okay, beta. Thank you. Hello, everyone. In today's video lecture, my aim is to continue with chapter 7. Let's see where we reach. So we have already done 7.1 and 7.2 of AC Chiang. And today I want to go ahead and I want to begin with 7.3. In this section, what the book is saying is how you can go ahead and differentiate. हाँ बेटा, when you have one variable as a function of the other. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज मैं आपको ये बोलूं कि z इज इक्वल टू 3y², मतलब z इज अ फंक्शन ऑफ y। z जो है वो y का फंक्शन है। एंड मैं आपको बोल दूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, मतलब y जो है वो x का फंक्शन है। और मैं आपको पूछूं कि z कैसे चेंज होगा जब x चेंज होगा। ध्यान से समझना। हाँ, z इज अ फंक्शन ऑफ y, z y का फंक्शन है और y जो है वो x का फंक्शन है। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि z कैसे चेंज होगा जब x चेंज होगा, हमें ये निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम z तो y का फंक्शन है तो z को हम डिफरेंशिएट करेंगे y से। और बेटा y जो है वो x का फंक्शन है तो y को हम डिफरेंशिएट कर देंगे x से और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। तो जब मैं z को y से डिफरेंशिएट करती हूँ, देखो z इज इक्वल टू 3y²। तो जब मैंने z को y से डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा 6y। बेटा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5।
तो जब मैंने y को x से डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला 2। अब मेरे को इनको कंबाइन करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू वाई इंटू 2। तो बच्चे ये हो जाएगा 12y। और y की वैल्यू क्या गिवन है हमें बेटा? y की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 5। तो y की जगह पे हम रिप्लेस करके लिख देंगे 2x प्लस 5। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कैलकुलेट dz बाई dx, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2x प्लस 5। क्लियर हुआ ये? एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं और उससे हमें थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देखो बेटा, सपोज मैं आपको बोलती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज मैंने आपको बोला कि z जो है वो y माइनस 3 है और y जो है वो x टू द पावर 3 है, और मैंने आपको बोला कैलकुलेट करो dz बाय dx। हाँ बेटा, तो अब देखो जो z है वो तो y का फंक्शन है और जो y है वो तो x का फंक्शन है, और मुझे z बताना है कि z कैसे चेंज होगा जब x चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर देंगे? हम z को डिफरेंशिएट करेंगे y से और y को डिफरेंशिएट करेंगे x से। ठीक है बेटा, तो z जो है वो है y माइनस 3। तो अगर मैं z को डिफरेंशिएट करती हूँ y से तो मुझे मिलेगा 1। बेटा जो y है वो है x टू द पावर 3। तो जब मैं y को डिफरेंशिएट करती हूँ x से तो आई विल गेट 3x स्क्वायर। अब बेटा आई विल कंबाइन दिस टुगेदर, तो dz बाई dx हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल प्लग दिस, मैं ये डाल दूंगी, और इंस्टेड ऑफ दिस आई विल प्लग दिस, मैं ये डाल दूंगी 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको ये बोल देती हूँ कि जो z है वो आपको दिया हुआ है बेटा कि z इज इक्वल टू वाई टू द पावर 17, और जो x है बेटा वो दिया हुआ है, सॉरी y जो है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। और मैं आपको बोल देती हूँ कैलकुलेट करो dz बाई dx। तो बेटा इसको करने के ना अब दो मेथड्स हैं, देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस। बेटा इसका पहला मेथड ये बोलता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं ना, इस y को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अगर मैं y को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो मेरे को z की जगह मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। y की जगह पे मैंने ये लिख दिया टू द पावर 17। अब मैं इसमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगा दूंगी, तो dz बाई dx क्या हो जाएगा बेटा? पावर विल कम डाउन, पावर को नीचे लेकर आओ, पावर विल रिड्यूस बाय 1, पावर एक कम कर दो, और जो भी इसके अंदर है उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3। तो पहला मेथड तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का, कि आपने क्या किया ना, आपने y को y की जगह पर इस चीज को रिप्लेस कर दिया, पूरा फंक्शन x में हो गया और फिर इसको x से डिफरेंशिएट कर दिया। ये मेथड नंबर 1 है। बेटा मेथड नंबर 2 वो है जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि dz बाई dx को कैसे लिख सकते हैं। z को डिफरेंशिएट करो y से और y को डिफरेंशिएट करो x से और इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे जब हमारे पास z दिया हुआ है y टू द पावर 17, तो जब मैंने z को y से डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा 17 y टू द पावर 16। और बेटा जब मैंने y लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और y को डिफरेंशिएट किया x से तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 3, है ना बेटा। तो अब अगर मेरे को इनको कंबाइन करना है तो मैं लिख सकती हूँ dz बाई dx इज इक्वल टू 17 y टू द पावर 16 2x प्लस 3। और y की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 रिप्लेस कर देंगे और हमें ये फाइनल आंसर मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि ये आंसर बेशक मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, दोनों से ही जो मेरा आंसर आ रहा है
वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम आंसर दे रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात बेटा? ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा हम इस रूल को समझने का कोशिश करेंगे बेटा। देखो, देयर इज समथिंग विच इज नोन एज इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब होता है बच्चे? कि अगर मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 5x प्लस 25, तो इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स का मतलब हो गया कि आई विल राइट x एज अ फंक्शन ऑफ y। क्या लिखेंगे हम? x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो x एज अ फंक्शन ऑफ y का क्या मतलब हो गया कि हम x को एक साइड पे रखेंगे और y को ऑपोजिट साइड पे कर देंगे। तो देखो यहां से हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा अगर y इज इक्वल टू 5x प्लस 25 है, तो 25 को दूसरी साइड ले जाओ, y माइनस 25 हो गया 5x और x हो गया y माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बेटा? अच्छा, अब मुझे जरा ध्यान से सोच के यहां से बताओ कि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालती हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी। और बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं तो ये आएगा 1/5y माइनस 5 ना, माइनस 25/5, तो 5 हो गया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/5y माइनस 5। तो बेटा अगर मैं यहां से dx बाई dy निकालूं, अगर मैं, ये मेरा x है, अगर मैं dx बाई dy निकालूं तो क्या मिलेगा आंसर? 1/5, ये वाला कोएफिशिएंट। तो ये हो गया dx बाई dy 1/5, ये हो गया dy बाई dx बचे, ये आया 5। और ये क्या था? ये था x एज अ फंक्शन ऑफ y, जब मैंने x को y के टर्म्स में लिखा, और यहां पे क्या किया था? y को x के टर्म्स में लिखा था। इसको बेटा जब हम x को y के फंक्शन में लिखते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स। तो हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर मुझे dx बाई dy निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 डिवाइडेड बाय dy बाई dx कर दो। ठीक है बेटा? देखो यहाँ पे dy बाई dx कितना था? 5। अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 5 करती हूं तो मेरे को मिल गया ना dx बाई dy। तो dx बाई dy निकालने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना फॉलो, आपको सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx निकालना है। और उस dy बाई dx को जैसे ही आप इन्वर्ट कर दोगे तो आपको dx बाई dy मिल जाएगा। दैट इज इट, व्हाट यू हैव टू डू। सिर्फ इतना करने से ही सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करके बताओ क्या dx बाई dy, क्या निकालना है? dx बाई dy। तो बेटा अब तो मेरे पास y इस साइड पे है, तो अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं y को x के कंपैरिजन में करूंगी ना, क्योंकि y है इस साइड पे। तो बेटा जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मुझे मिल जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 1। बट क्वेश्चन पूछ रहा है dx बाई dy, क्वेश्चन तो इसको ऑपोजिट पूछ रहा है। तो हम रूल लगा देंगे कि dx बाई dy 1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx होता है, और dy बाई dx की वैल्यू ये दी गई है। तो dy बाई dx की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू को प्लग इन कर सकती हूँ। तो बेटा ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5x टू द पावर 4 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है बेटा? तो ये वाला जो पार्ट था ना हमारा, ये वाला पार्ट था हमारा 7.3 ऑफ योर एसी चियांग। अब बेटा 7.4 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चे 7.4 जो है बुक का, वो बात करता है पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या किया जाता है
एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वेरिएबल की कंपैरिजन में डिफरेंशिएट किया जाता है। समझे? एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं बेटा कि हमारा जो फंक्शन है ना, ये दो वेरिएबल्स में गिवन है, 3x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 4x2 स्क्वायर, ये फंक्शन हमें गिवन है। और मैं आपको ये बोल रही हूं कि मुझे बताओ कि ये फंक्शन कैसे बदलेगा जब x1 बदलेगा। इसे बोल देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये फंक्शन कैसे चेंज होगा जब x1 चेंज होगा, मतलब कि मैं x2 को कांस्टेंट रख रही हूं। तो जहां जहां पर आप x2 देखोगे ना, इसको एक कांस्टेंट की तरह समझना कि ये कोई एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसकी जगह कोई वैल्यू डाल देना एक तरीके से कि ठीक है, ये कोई कांस्टेंट c है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ x1 पे सारा ध्यान रखना। तो x1 कहां पे आ रहा है बेटा? x1 यहां पे आ रहा है और x1 यहां पे आ रहा है। x2 कांस्टेंट, उसका कोई काम नहीं है, वो एक कांस्टेंट की तरह बस लगा रहेगा जहां पे भी है। तो बच्चे यहां देखो, x1 स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन होगी वो 2x1 हो जाएगी, है ना? पावर नीचे आ जाएगी, पावर कम्स डाउन। प्लस बेटा यहां पर x2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दो, x1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 प्लस बेटा यहां पर तो x1 आ ही नहीं रहा, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। तो जब हम इसे लिखेंगे यहां पे, तो ये बन जाएगा 6x1 प्लस x2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन को x2 के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो बेटा x2 अब हमें देखना है कि कहां कहां पे आ रहा है। ध्यान से देखो, जब x2 के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 कांस्टेंट एक्ट करेगा। तो बेटा ये तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब देखो डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। यहां पे एक भी x2 नहीं आ रहा, तो x2 के कंपैरिजन में ये हो गया 0, क्योंकि x2 तो है ही नहीं। यहां पर x1 को छोड़ दो और x2 की जो डिफरेंशिएशन होगी वो हो जाएगी 1 प्लस 4। बेटा x2 स्क्वायर है तो पावर विल कम डाउन एंड पावर विल रिड्यूस बाय 1। तो बच्चे ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस 8x2, और ये इसका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो फंक्शन है वो दिया हुआ है u प्लस 4 इंटू 3u प्लस 2v, और मैं आपको बोल देती हूँ फाइंड करके दिखाओ कि कैसे फंक्शन चेंज होगा जब u चेंज होगा और कैसे फंक्शन चेंज होगा जब v चेंज होगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझना है, जब भी हम फंक्शन को u के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करेंगे तो v को कांस्टेंट की तरह रखना होगा। v इज अ कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो जब जब v देखोगे आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। और क्योंकि दो फंक्शंस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल भी बनाना पड़ेगा। तो अब ध्यान से सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेटा पहले मैं पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूं u के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोडक्ट रूल भी लगाना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मैं एज इट इज छोड़ रही हूं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रही। फिर बेटा मैं दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी u के कंपैरिजन में, और मैं पहले फंक्शन को छोड़ दूंगी क्योंकि मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही हूं। एम आई क्लियर विद दैट? ठीक है बच्चे, अब देखो ये u प्लस 4 को मुझे u से डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो एक मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू u प्लस 4, और मैं आपको बोलूं बेटा कि इसकी डिफरेंशिएशन करो u के कंपैरिजन में, तो कैसे करोगे? u की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1, है कि नहीं है? तो बेटा इस पूरे की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1
into 3u plus 2v प्लस, अब मुझको इस चीज को डिफरेंशिएट करना है u के कंपैरिजन में। फिर से अलग से लेके देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास एक फंक्शन है 3u प्लस 2v और मैं आपको बोल दूं कि इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ u के कंपैरिजन में, तो 3u की जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 3 और v तो कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा बेटा 3। क्लियर हुई बात? तो यहां पर इस पूरी चीज की डिफरेंशिएशन आती है 3 इंटू यू प्लस 4। ठीक है बेटा, तो इस पूरे को जब हम अब ओपन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3u प्लस 2v प्लस 3u प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 6u प्लस 2v प्लस 12। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। सपोज मैं आपको कह देती हूं कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन जो आपको गिवन है वो है एफ एक्स वाई, ये मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन ले रही हूं बेटा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, और मैं आपको बोलती हूं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो एक्स के टर्म्स में, एक्स से डिफरेंशिएट करो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप कैसे करोगे इसको? तो ध्यान से देखना बेटा, एक तो मेरे को इसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मैं y को कांस्टेंट रखूंगी, ये दोनों चीजों का मेरे को ध्यान रखना जरूरी है। तो बेटा जब मैंने x के कंपेयर, देखो डिफरेंशिएशन करनी है न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, माइनस प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटा, डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है अपॉन बेटा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ये हमारा लग गया क्वेश्चन रूल। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स की कंपैरिजन में, इसको अलग से लेके देख लेते हैं। तो बच्चे अगर मैं आपको बोलती हूं कि y जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये वाला पार्ट ले रही हूं मैं, और मैं आपको बोल देती हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करो x के कंपैरिजन में, तो बेटा क्या आएगा 2x माइनस 0। तो इस पूरे की जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगी 2x, तो मैं इसको 2x से रिप्लेस कर देती हूं इनटू ये xy एज इट इज। बेटा अब यहां पे देखो, अगर मैं आपको बोल देती हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है x इंटू वाई और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है x के कंपैरिजन में, देखो x के कंपैरिजन में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा y तो कांस्टेंट है, तो y को आप बिल्कुल मत छेड़ो और x की डिफरेंशिएशन यहां से आ जाएगी 1, तो इस पूरे की डिफरेंशिएशन हो जाएगी सिर्फ y, क्योंकि x के कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, तो x की डिफरेंशिएशन हुई 1 और y एक कांस्टेंट है, तो ये बेटा हो जाएगा x, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एज इट इज रखेंगे अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर। क्लियर हुई ये बात? तो बेटा यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x² y माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन x² y², ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका 7.4 सेक्शन है जो पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करता है, जिसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, एक डिफरेंशिएशन करते हुए दूसरे को आपको कांस्टेंट होल्ड कर, ठीक है, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट चीज आता है वो बेसिकली आ जाता है हमारे पास कंपैरेटिव स्टैटिक्स। कंपैरेटिव स्टैटिक्स सेक्शन 7.5 है इस बुक का, जिसमें बुक ये बोल रही है बेसिकली कि हमें कभी कभी ये भी पता होना चाहिए कि कैसे एक वेरिएबल के चेंज होने से बाकी चीजों पे असर पड़ता है।
और ये समझाने के लिए मैं बुक का एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी जिसको हम बोलते हैं मार्केट में। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपके पास दो फंक्शन है, एक डिमांड का और एक सप्लाई का, और उसमें हम ऐसा कर देते हैं कि हमारी जो डिमांड की इक्वेशन है वो है ए माइनस बीपी, और जो हमारी सप्लाई की इक्वेशन है वो हमें दी हुई है माइनस सी प्लस डीपी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी, है ना। तो हमने बोल दिया ए माइनस बीपी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डीपी। तो यहां से हमारा इक्विलिब्रियम आ गया ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी इंटू पी, और यहां से हमारे पास जो प्राइस आएगा वो आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा ये प्राइस कैसे बदलेगा जब आपका ए चेंज होगा, ये प्राइस कैसे चेंज होगा जब ए चेंज होगा, मतलब आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर। तो देखो ये हो गया ए अपॉन बी प्लस डी प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, और जब मैं ए की कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करूं तो ए तो सिर्फ यहां पे आ रहा है ना, तो ए की डिफरेंशिएशन हो गई 1 अपॉन बी प्लस डी, और ये इसका सॉल्यूशन है। तो जब हम ऐसे इक्विलिब्रियम निकालने के बाद और इसका फाइनल आंसर निकालते हैं, इक्विलिब्रियम निकालने के बाद, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।